Hello and good evening, and welcome to class number 21 of the Economy Foundation course, which will feel like a magic show for the next 2 days, at least. It has already felt like a magic show, but in the next 2 days, it will feel like a huge magic show or a good magic show. Hope you're all doing well. If you can see and hear me, please write yes in the chat and we'll get started. Yeah. All right. So, hello and welcome. Hope you're all doing well. All right. So, today we will continue our discussion of poverty and inequality. ठीक है 440 पे स्टार्ट करेंगे पॉवर्टी में आई हैड टू टीच यू अ कपल ऑफ थिंग्स वन लास्ट इंडेक्स वाज लेफ्ट इन पॉवर्टी वी विल सी दिस इंडेक्स देन वी विल हैव अ टेस्ट देखते हैं आप कितना पढ़ के आए हो देन वी विल रीड इन पॉवर्टी वन थिंग कॉल्ड इंडिया का प्रोग्रेस ऑन पॉवर्टी हाउ हैज इंडिया प्रोग्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी दैट वी विल सी इसमें आई विल टेक and that test will actually be a test of your thinking, and then I will show you how that test is actually a jadoo. Then we'll move on to inequality. In inequality today, first we'll understand the reasons of inequality, then we will try and understand the measurement of inequality, then we will understand growth and inequality. Tomorrow we will apply these concepts, both poverty and inequality together, we will apply to India. एंड टुमारो आपको याद है जीडीपी की जैसे जो लास्ट क्लास हुई थी दैट वाज वेरी based on a lot of discussion to find out how we can write answers, how to analyze these things. So कल इन दोनों की जो क्लास होगी that will be the mains class, and then we will move on to the next topic which will be inflation. ठीक है, good that you are able to see and hear. एक बार इसको जरा प्राइवेट कर दिया जाए चैट को. All right. So just 2-3 more minutes I will say something and then we will start. So as you all know, कल means का result आया, right? And this is not a claim or anything. This is just the internal data that we have. We will give you the numbers when we have all these surveys and everything completed. But on the internal data that Saarthi IAS has, on the basis of our mains courses this year, we were doing a lot of courses. आपको देखा ही है that we are a very mains focused institution. Like we always focus on the mains exam. We take it seriously and we focus on the mains. Even when I'm teaching you, I'm always talking about the mains exam. So this is a proud moment actually for all of us that there are more than 600 people who were a part of our mains program and are giving the interview this year. Again, this is not a public claim. This is not branding करनी होती तो YouTube पे बताता. आपको बता रहा हूँ that hard work pays off, right? And we will give you this data. Like we can give you this data even now, but we are waiting for verification. This number is actually greater. This is the amount of people who will be giving interview with Saarthi IAS this year. और अब क्या होता है ना, मार्केट ऐसा हो गया है कि इंटरव्यू के बाद द रिजल्ट गेट्स वेरी पोल्यूटेड. क्या होता है कि किसी ने कहीं इंटरव्यू दिया है, मॉक इंटरव्यू दिया है, तो वो इंस्टीट्यूशन भी क्लेम करता है कि ये हमारा स्टूडेंट है वगैरह वगैरह. बट दीज आर मेन स्टूडेंट, राइट? दीज आर मेन स्टूडेंट्स. दीज आर नॉट पीपल हु आर मियरली स्टूडेंट्स ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि अभी तो इंटरव्यू के स्टूडेंट्स आएंगे. एंड जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, यू एनरोल इन एवरी इंस्टीट्यूशन. मैंने भी 10 जगह मॉक इंटरव्यू दिया था, राइट? This is the result of our mains hard work, and we are extremely proud to share this with you, and we hope that you will contribute and make this number higher with me next year. ठीक है, हमने बहुत मेहनत करी थी मेंस के टाइम पे, हमने बैठ के बहुत कंटेंट बनाया था. आई थिंक इवन इन द कंटेंट नाउ इट रिफ्लेक्ट्स that we are a content first institution. That is the first thing we focus on, and this is the major result of our hard work. Anyway, chalo, let's going forward from here. Let us continue what we were discussing yesterday. Now, only one index was left, which was gender inequality index. Okay. Now,
जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या है? अभी तक हम क्या देख रहे थे? जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल recap of what we are currently seeing. Yesterday we saw the concept of human development. In human development we saw there are 4 pillars, there are 4 approaches. Who were the 2 scientists who gave this approach? ये हमने देखा था. Then from human development we understood yesterday that there is a human development report published by the United Nations Development Program. In this human development report, they talk of 5 indicators. Which are these indicators? One is Human Development Index HDI, one is Inequality Adjusted HDI, one is Multidimensional Poverty Index, one is Gender Development Index. ये कल चारों हमने देख लिए थे. The last indicator here is Gender Inequality Index. This is the last index we have to see, जो हमने कल नहीं देखा था. Right? This is the last index that we have to see. Okay? तो अब यहां से देखेंगे. Thank you for your nice words. All right, चलो. Now let's look at the idea of the gender inequality index. Gender inequality index का idea क्या है कि ये 3 dimensions पे compare करता है. One is health, one is empowerment, and one is labor market. And it compares the values. It compares the values between again men and women. तो men और women में ये compare करता है the inequality that exists. ठीक है? Now, in this inequality that exists, how does it count the inequality? तो पहला indicator है health. Once the first indicator is health में it looks at 2 things, maternal mortality ratio and adolescent birth rate. Maternal mortality ratio का क्या मतलब? The number, although there is a specific definition of maternal mortality ratio when we will see when we look at health, but maternal mortality ratio basically broadly means the death that is happening of pregnant women. Pregnant women dying means maternal mortality ratio. And adolescent birth rate. Adolescent birth rate is number of adolescent women giving birth. Now what is adolescent? Adolescent is the period just before adulthood and the period just after adulthood. My mother, for example, is an adolescent medicine specialist. So she sees patients mainly in the ages of 15 to 20. Now there are various definitions, but this age from 15 to 20, somewhere it is in some textbooks it says 15 to 18. This age, which is just before adulthood and just after adulthood, young adults, this is called adolescent age. Now ideally, women should not be giving birth in this age. Right? इस age पे women को birth नहीं देना चाहिए because it impacts their ability to then grow further. This is not the age where you want to take up maternal responsibilities. Right? तो हेल्थ में ये 2 चीजों को कंपेयर करता है. I'll just write here ताकि दिख नहीं रहा है तो दिख जाएगा. The gender inequality index looks at 3 things. The first thing is health. In health, it looks at 2 indicators. One is maternal mortality ratio and one is adolescent birth rate. Then it looks at the second indicator, which is empowerment. What does it say in terms of empowerment? Empowerment में it looks at how many men and women have had secondary education and how many men and women are part of parliament. तो empowerment में क्या करेगा? Empowerment में it will compare 2 things. When we look at empowerment, then in empowerment it will compare 2 things. One is secondary education. How many men have had secondary education and how many women have had secondary education. Primary education होती है जो 6 to 14 years की होती है. Secondary education is after that. तो secondary education में men और women को compare करेगा. और parliament में seats कि हमारी parliament में for example राज्यसभा लोकसभा मिला के there are how many seats? 543 plus 250. So there are close to 820 seats. Somewhere around that the number is there. तो ये जो seats हैं 800 seats, sorry. So they're close to 800 seats. How many of these parliamentary seats belong to men and how many of these parliamentary seats belong to women? ये एक comparison करेगा to look at empowerment difference between men and women. The third thing it will look at is labor market. Labor market. So it will look at 2 things again in the labor market. When it looks at the third thing, it is again labor market. Labor market में it will look at labor force participation rate. ये हम देख चुके हैं कि men का labor force participation rate कितना है और women का labor force participation rate कितना है. So to construct the gender inequality index, you see the amount of maternal mortality ratio, how many pregnant women are dying as a result of childbirth,
how much births are happening in adolescent ages, how many men versus women have secondary education, how many men versus women are parliamentarians, and how many men versus women are part of the labor force. On the basis of this, it tries to construct a mathematical number to the gender inequality in the country. This is the idea of gender inequality index. This is part of the human development report. उसके जो 5 इंडेक्स हैं उसमें एक ये है. And on the basis of this performance, India's value has been 0.437. Now, एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, that lower the gender inequality index value, जितनी लो वैल्यू होगी उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी. एंड इट्स इजी टू थिंक. नाम है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, द मेजर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी. जितना कम आएगा मेजर ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी उतना अच्छा. So the lower the value of gender inequality index, the better it is. India's value is 0.4 and India's rank in this index across the globe is 108 out of 166. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? Why is this important? This is important that because women कहां है हमारे सिलेबस में? Where is this topic in our syllabus? Specifically women and women's empowerment. Where is this in the syllabus? बताओ. Where is this in the syllabus? Chitranshi is asking that health criteria is only for women. Health criteria is based on pregnancy. How can I make a pregnancy criteria for men? बताओ men के लिए कैसे बनेगा pregnancy criteria? Women is in the syllabus in GS1 in society. कहीं और भी है क्या? कहीं और भी है क्या? नहीं, GS1 GS2 मत बोलो. अगर आप कुछ बोलते हो then tell the name of the subject also. वेरी गुड, श्रुति ने बिल्कुल सही बताया. GS2 में देयर इज अ टॉपिक ऑफ सोशल जस्टिस, जिसमें भी टॉक ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस, जिसमें देयर इज अ डिस्कशन ऑन वुमेन. अब अगर आपको ये बातें पता है, नाउ इफ यू नो दीज टू थिंग्स, यू नो दिस वैल्यू एंड दिस रैंक, अगर आपको ये दोनों बातें पता है, then you can use this as a wonderful introduction in any question that appears on the mains with regards to women. Women पे related women के regarding कोई भी question अगर आता है, तो introduction में you can use these values and you know how the index is constructed. अगर prelims पे question आएगा तो यहां से हो जाएगा. Now, so far in our discussion of poverty, we have seen various things. Only thing we are left to see is India's progress. कि इंडिया ने कैसे प्रोग्रेस किया है पॉवर्टी पे ओवर द इयर्स. इसमें हमने थोड़ा सा देखा था व्हेन वी वर लुकिंग एट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट. जब ये रिपोर्ट देख रहे थे तो इसमें हमने देखा था दैट वी हैव मूव्ड 200 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम द टाइम ऑफ 2005 to 2015. So in 10 years 200 million people we have moved out of poverty. Right, this only progress we have seen. अब इसके अराउंड जो बाकी इंडिया की प्रोग्रेस है दैट वी विल सी, बट वी विल सी दैट आफ्टर द टेस्ट. तो अभी आपका टेस्ट है. नाउ आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ द वीडियो फॉर 1 मिनट. 1 मिनट के लिए मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं ताकि मैं टेस्ट लोड कर सकूं, फिर हम टेस्ट डिस्कस करेंगे. ठीक है.
All right, let's get started. स्टार्ट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. 1 मिनट है आपके पास. स्टार्ट. All right. Next question. Question 2. Okay. Next question. Question 3. This question we are not solving. We are not solving. This question is just for demonstration. Look at the question. As per UNDP's HDR of 2020, in which of the HDI components has India improved? That means that year's most recent human development report becomes important for us. मतलब जब होगा तो हमें पढ़ना होगा. हम ये solve नहीं कर रहे because 2020 का question है. It's not relevant now, but it is important for us to understand this. Next. Now question 3 we are leaving. So question 3 skip. Question 4. Let's do this. इस ये करो आप. All right. Next question. This is now question 5.
All right. This is now question 6. Slightly tough question. Okay. Let's do this. This is now question 7, right? Okay, Sanskriti, thank you. I'll check. All right, let's move on. This is now question 8. Very good. Good, good. Okay, Shyam. Hello, good. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज A4 शीट पे भी लिखते रहना ताकि आप बाद में अपना स्कोर चेक कर सको. All right, next question. Question 10 now, I think.
Question 11. Okay. Question 12. Same question here almost. All right. ये वाला हमने अभी किया नहीं है, कल हम मनरेगा पढ़ेंगे तो ये कल करेंगे. ये लास्ट वाला है, ये कर लेते हैं. ऊपर का क्वेश्चन डज नॉट मैटर, यहीं से क्वेश्चन है. लास्ट क्वेश्चन. All right. Let us now look at the answers. बार आंसर्स देखते हैं. राइट. पहले तो rather than before we look at the answers, आई होप आपको देखो इतने ही क्वेश्चन आज तक पावर्टी में पूछे गए हैं. पावर्टी के टॉपिक से these are the sum total of questions that have been asked in CDS, CAPF and prelims. There was not even a single question, I hope, जो हमने सुन ना रखा हो. Right? So at least we can assume that we have had the feeling of completion. We have completed poverty. Of course, some topics are left. एक तो मैंने आपको खुद ही बोला है कि we are left with मनरेगा, but broadly we have completed the idea of poverty. ठीक है, अब आंसर देखते हैं. चलो, first question. In a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in others because, like we had discussed last time, price levels vary and basket of commodities vary. यहाँ पे basket of commodities का option है नहीं, तो answer will be B, price levels vary. This we have seen yesterday when we were discussing measurement of poverty, or in the first class when we were discussing measurement of poverty. Next question. Which of the following educational development indicators is currently used by UNDP to construct HDI? HDI, as you can see, बहुत बार question आए. HDI has three things: health, education, standard of living. For education, it sees two things: mean years of schooling and expected years of schooling. Answer here is mean years of schooling.
Now this question can also be a hint to you on what subjectivity looks like. लेवल ऑफ लिटरेसी से भी हम एजुकेशन देख सकते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से भी हम एजुकेशन देख सकते हैं, ड्रॉप आउट रेट से भी हम एजुकेशन देख सकते हैं, राइट? सो दिस टॉक्स अबाउट लाइक दिस इज आल्सो एन आइडिया ऑफ सब्जेक्टिविटी जो हम डिस्कस कर चुके हैं. This question we have not done, but when we will be doing current affairs after the economic survey and budget are released, we will focus on these things also. Then, next, computation of poverty in terms of monthly per capita consumption expenditure based on mixed reference period was recommended by whom? सबसे पहले आई थी दांदेकर एंड रथ, फिर आई थी अलग, फिर आई थी लकड़ावाला, then came तेंदुलकर, and it was Tendulkar committee that recommended this type of poverty line. Answer is B. Next, which one of the following indicators is included in the National Multidimensional Poverty Index? Simple question. ये तो अगर आपने MPI रिवाइज किया है तो ये क्वेश्चन आपको आता होगा. आंसर इज इयर्स ऑफ स्कूलिंग. एजुकेशन में दिस इज वन ऑफ द क्राइटेरिया कि द चाइल्ड हु हैज टू गो, हमने याद भी किया था कि स्कूल एंटरिंग एज +6 आर दे गोइंग और नॉट, ये देखा जाता है. तो आंसर इज इयर्स ऑफ स्कूलिंग. सिंपल, डायरेक्टली फ्रॉम द इंडेक्स. दिस इज अ टफ क्वेश्चन एंड इसमें मैं आपको दिखाता हूं कि दिमाग कैसे लगाना होता है. इसमें आई एम श्योर काफियों का आंसर भी गलत था इसमें, ऑल्दो मोस्ट पीपल हैड इट राइट. According to National Multidimensional Poverty Index constructed by Niti Aayog, a household is considered deprived if one single member of household is identified as undernourished. This is correct. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. First statement there is no doubt. Now let's look at what the second statement is saying. The body mass index, BMI. I am sure ये टर्म आपने आज से पहले सुनी होगी. नहीं भी सुनी है तो मैं बताता हूं ये क्वेश्चन कैसे करना है. BMI of a woman member between 15 and 49 years of age is below 18.5 kg per meter square. How is the body mass index measured? नाम से ही पता चल रहा है, body and mass. यूनिट से भी पता चल रहा है, it is measured in kg per meter square. ये लिखा है. इसका मतलब the calculation of BMI will be, ऊपर वेट होगा, इंडिविजुअल का निकालना है तो it will be divided by height in meters squared. Weight divided by height in meters square. This is the formula for body mass index. Now, the ideal body mass index should be between 20 and 25. If your body mass index is greater than 25, that means you are overweight. If your body mass index is less than 20, that means you are underweight. अब यहां पर 20 भी नहीं दिया हुआ, यहां 18.5 दिया हुआ है. So if I take the weight of this woman and I divide it by her height and square the height, this value is coming out to be less than 18.5. So for this woman, weight divided by height squared, this is obviously in meter, is coming out to be less than 18.5 kg per meter square. Does this not show that this woman is undernourished? This is also showing that this woman is undernourished. What does this mean? This is also falling into the first criteria. Answer is C. Now यहां पर दिमाग लगाना था. And I wanted to check whether you will be able to apply your mind here or not. नहीं तो बहुत आसान था मेरे लिए, मैं कल आपको BMI पढ़ा देता. I knew you were going to do this question today, but it is going to be something where you have to apply your mind. अगर इंडेक्स पढ़ा है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट पता है. सेकंड, यू कैन अप्लाई योर माइंड. ठीक है, समझ आया क्वेश्चन कैसे करना था? समझ आया क्वेश्चन? अब जाके आज अपना भी BMI कैलकुलेट करना. एंड लेट्स होप आप सबका भी BMI 20 to 25 के बीच में ही हो एंड यू आर ऑल हेल्दी एंड फिट, अनलाइक मी, यू आर नॉट गेटिंग फैट, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉवर्टी इन इंडिया. ठीक है, क्या क्वेश्चन है? व्हाइल डिटरमाइनिंग पॉवर्टी इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट,
educational and medical requirements are determined for subsistence. This is exactly the idea of consumption expenditure as given by Tendulkar committee. This is correct. The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural, 2100 calories per person per day in urban areas. This is also correct. Answer is C. पढ़ चुके हैं हम, should not be a problem. Next. Which one of the following gave the concept of human development? Direct question. Mehboob ul Haq, Pakistani economist, gave the concept of human development index. Next question. Which one of the following approaches of human development was initially proposed by the ILO and emphasized on 6 things: health, education, food, water supply, sanitation and housing? We have read this also yesterday. This is the basic needs approach. ये हमने कल पढ़ा था. Next. Which one of the following is not a dimension of HDI? HDI में 3 चीजें होती हैं. Same question has been asked before also. Health, education and standard of living. यहाँ पर an option is access to banking and other financial provisions. This is not a part of HDI, so this is the answer. Which one of the following are considered 4 main pillars of human development? Direct question. Second, this question is also the same. Considered as pillars of human development, there are 4 pillars: equity, productivity, empowerment and sustainability. Answer here is B. Security is not a pillar, so answer here will be 1, 2 and 3, which will be option C, I think. Yes, option C. This we did not do because मनरेगा अभी हमने पढ़ा नहीं है. Last question. This question I want to talk about. अब देखो how you must apply your brain and why vocabulary matters. पहले तो, do you know the meaning of these words? Tangible and intangible. When we will read growth, ये भी हमें समझ आएगा. Tangible means I can touch and feel. This pen is tangible. Touch, feel, count. Money is tangible. Pen is tangible. Water is tangible. Intangible is I cannot touch, feel or count. Health is intangible. Intelligence is intangible. Respect is intangible. So this is intangible. Okay? अब क्या question है? Human capital formation as a concept. We know the meaning of the word capital. Something that gives future stream of benefits. इससे हमने एक चीज पढ़ी. Already we have seen a question on social capital. ये क्वेश्चन मैंने जान के आपको तब नहीं कराया. ये जान के क्वेश्चन तब नहीं कराया क्योंकि मुझे पता था अभी अभी एक्सप्लेन किया आप कर लोगे. जान के क्वेश्चन अब डाला गया है. Human capital formation as a concept is better explained in terms of process which enables 1. Individuals of a country to accumulate more capital. This is incorrect. Accumulate more capital would be different. Investment के terms में बात हो रही है. Accumulation नहीं है ये capital की. Human capital is things that will give humans a future return of benefits like knowledge, skill levels, capacities of people in the country. This is correct. So 2 is correct, 1 is wrong. तो मेरे को 1 वाला हटा देना है, 1 वाला हटा देना है. Now it is only between 2 only and 2 and 4. So I am knowing already that the humans of my country will have more skills, more education, more health. ये हमने demographic dividend में भी ये concept हमने पढ़ा है. अब देखो, is this tangible wealth or is this intangible wealth? The skills you have, the education you have, the health you have is intangible wealth. So answer will be 2 and 4. अब आपको बताता हूं एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का बिना कुछ भी जाने. मुझे मान लो कुछ भी नहीं आता. You can do things, questions like this also, even if you don't know the meaning of these words. Don't use these techniques जो मैं अभी सिखा रहा हूं. Don't use them unless you are absolutely stuck. जब बिल्कुल स्टक हो तभी यूज करना. बेटर हो कि आपके पास नॉलेज है. नॉलेज नहीं है then you can use these techniques जो मैं अब आपको सिखाऊंगा. देखो, मुझे नहीं पता ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है. आई हैव नो आइडिया. मैंने 4 ऑप्शंस देखे. पहला ऑप्शन कहता है इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री एक्यूमुलेट मोर कैपिटल. आई से ओके मे बी, आई डोंट नो. इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल लेवल्स एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री. ओके मे बी, आई डोंट नो. मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है. लेट मी लुक एट 3. accumulation of tangible wealth. Okay. Accumulation of intangible wealth. Okay. Now, can something be both tangible and intangible together? क्या कभी एक चीज दोनों tangible intangible साथ में हो सकती है?
Tangible means it can be touched and counted. Intangible means it cannot be touched and counted. Right? तो ये तो साथ में these two cannot be correct because these are opposite options. Again I am repeating, use these things only if you don't know. हम ये पढ़ चुके हैं, हमें ये सब करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बट कभी और अगर पढ़ जाए, आपको टेक्निक सिखा रहा हूं मैं. These two are opposite options, so they cannot be correct together, and one of them must be correct. एक तो करेक्ट होगा ना, या तो कोई चीज टेंजिबल होगी या कोई चीज अनटेंजिबल होगी, या तो इंटेंजिबल होगी या टेंजिबल होगी. सो अब यहां पर क्या मुझे समझ आया, 3 and 4 कैन नॉट अपीयर टुगेदर, एंड 3 and 4 1 मस्ट बी करेक्ट. नाउ विद दिस इक्वेशन आई कैन सॉल्व. यहां पर 3 या 4 में से एक भी नहीं है, ये ऑप्शन हटाओ. यहां पर 3 या 4 में से एक भी नहीं है, ये ऑप्शन हटाओ. यहां पर 3 और 4 साथ में है, ये ऑप्शन भी गलत है. आंसर इज सी. आपको आइडियली ये टेक्निक्स यूज नहीं करनी चाहिए, आपको आना चाहिए. इट्स ऑलवेज बेटर टू नो, बट इन केस यू डोंट नो यू कैन यूज दीज टेक्निक्स ऑल्सो. ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो इन केस आपको नहीं आता तो. समझ आया कैसे सॉल्व किया मैंने? 3 and 4 आर ऑपोजिट ऑप्शंस, one of them must be correct and both cannot be correct. Therefore I have come to this conclusion that in this option both are there, so this is wrong. यहां पर एक भी नहीं है, this is wrong. यहां पर एक भी नहीं है, this is wrong. ठीक है, ये आइडियली आपको यूज नहीं करना चाहिए, बट अगर कभी फंस जाओ, इन केस यू गेट स्टक समटाइम, देन यू कैन यूज दीज टेक्निक्स. ठीक है, चलो अब लेट्स कंटिन्यू. स्कोर बताओ. हाँ जी, स्कोर ऑसम तो ठीक है, अब स्कोर बताओ. 11 out of 12, 9, 10, 9, 10, 7 थोड़ा कम है. आलोक थोड़ा सा रिवाइज करो. 11, 10, 9, 9 के ऊपर स्कोर इज गुड. 9 के ऊपर आपका स्कोर अच्छा है. 9 अगर आपने स्कोर किया है तो गुड, बट देखो रिवाइज करते तो आपको भी पता है. नाउ टेल मी इन द चैट ओनली, यू कैन टेल मी जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं. ओनली रीजन कैन बी रिविजन. एक वो सीडीएस वाला क्वेश्चन जो बीएमआई वाला था, उसमें आपको माफी है, आप गलत करते हो, कोई बात नहीं. बाकी आई एम श्योर यू विल ऑल्सो अग्री कि आपकी रिविजन लैकिंग थी. तो देखो यार, उतनी मेहनत आप भी करो, आप भी उतनी रिविजन करो, है ना. ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने छोड़ा हो. देयर इज नॉट इवन सिंगल कॉन्सेप्ट इन पॉवर्टी दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड. आपको सारे पीवाईक्यूज आपको देख लिया आपने. दिस मींस हमें रिवीजन भी उसी लेवल की करनी है ताकि वी आर एबल टू डू जस्टिस टू द कंटेंट दैट वी आर रीडिंग. ठीक है, ऑल राइट, चलो आगे चलते हैं. लेट्स मूव ऑन. नाउ लेट अस लुक एट सम. राइट, चलो नाउ लेट्स लुक एट सम ग्लोबल कंपैरिजंस. हमने कुछ इंडेक्सेस देखे थे, उन इंडेक्सेस का ग्लोबल कंपैरिजन देखते हैं. राइट, वेयर इज द वर्ल्ड हेडिंग एंड वेयर इज इंडिया हेडिंग. अभी आएगा मेंस क्वेश्चन. अरे आएगा मेंस क्वेश्चन, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी आएगा. होल्ड, छोड़ेंगे नहीं आपको, टेंशन मत लो. ठीक है, लेट्स लुक एट कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. तो अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक कंपैरिजन वैल्यू है. राइट, इफ वी लुक एट हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग, we see that the world is progressing at this level. So world का जो average HDI है, अगर मैं सारे लोग world के एक country मान लूं and I calculate their HDI, it comes out to somewhere around 0.75. This is the average level of the world. India's level is somewhere around 0.65. So India has also been improving, the world has also been improving. Now how do you read graphs like this? ऐसा ग्राफ अगर मुझे दिखे तो how do I read it? Look at the gap between India and the world in 1990. यहां पर इंडिया और वर्ल्ड के बीच में गैप इतना था. This is the level of gap, right? This level of gap here. And now look at the level of gap between India and the world. The gap between India and the world has reduced. यहां पर इंडिया और वर्ल्ड के बीच में गैप काफी ज्यादा है, यहां पर इंडिया और वर्ल्ड के बीच में गैप कम है. Right? So in this way, what can I conclude? That India's growth in terms of HDI is faster
एज कंपेयर टू द एवरेज वर्ल्ड ग्रोथ। जो वर्ल्ड की एवरेज ग्रोथ है, ये मैंने सारी वर्ल्ड की एवरेज ले ली, वर्ल्ड की जो ग्रोथ रही है वर्सेस इंडिया की जो ग्रोथ रही है, इंडिया की ग्रोथ फास्टर है, दैट इज व्हाई इंडिया इज एबल टू क्लोज द गैप। सो इंडिया हैज अ गुड पेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, बट इंडिया इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड। इंडिया इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ, इफ यू लुक एट द एवरेज वैल्यू, हम वर्ल्ड एवरेज से नीचे हैं अभी भी। So India is lagging behind in absolute numbers, but as far as progress is concerned, India is doing a decent job. है ना? ठीक है, let's look at the next thing. Second is comparison of gender development index. Same sort of trend I can see here. पहले gap बड़ा था, now the gap has shrunk. So India has moved like this, the world has moved like this. So the gap has shrunk. That means India is progressing faster than the rest of the world. If you look at the average world progress, India is doing better than that as far as GDI is concerned. But India still in absolute numbers has more inequality between men and women than the rest of the world does. Now, this is the value of inequality adjusted HDI over the years. अब अगर मैं इसको देखूं, ये है HDI, ये है इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI। ऊपर वाली जो फिगर है, ये ग्राफ कैसे बना है, इंडिया की करंट HDI वैल्यू इज समवेयर अराउंड 0.644 एंड इनइक्वालिटी एडजस्टेड वैल्यू इज 0.444। तो ये गैप ऐसे बना है, वी हैव प्लॉटेड दिस नंबर ओवर द इयर्स। ये अभी का नंबर है, ऐसे हमने ओवर द इयर्स नंबर प्लॉट करके इस टाइप का ग्राफ बनाया है। तो अगर मैं इस टाइप का ग्राफ देखूं, HDI is also increasing, inequality adjusted HDI is also increasing, but look at this gap. क्या ये जो गैप है, ये जो रेड में है, what does this gap represent? क्या दिखा रहा है ये गैप इंडिया का? What does this red gap represent? What does this red gap represent? This shows India's inequality. इसमें कोई बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं आया है. There has not been a lot of reduction as far as inequality is concerned. बहुत ज्यादा रिडक्शन नहीं है. We can see that the red gap, although both values have shifted up or down, the red gap is staying the same. So inequality in India is almost the same as before. आज हम inequality पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा, but inequality इंडिया में आज भी है. Now removing inequality is a part of our sustainable development goals. Which SDG is this? कौन से SDG में है inequality कम करना? Which SDG is this? ये आप मेरे को चार्ट में बताओगे. Lastly, let us look at gender inequality index. Very good. It is 10. ठीक है. Lastly, let's look at gender inequality index. Gender inequality index में हमने क्या देखा था? ये इंडेक्स हमने अभी पढ़ा है. What did we read about this? Lower the value, the better it is. Lower the value, better it is. जितनी कम inequality, ideally value should be 0. What is the gender inequality in your country? Should be 0. ठीक है. देखो, India's value is like this. India has ended up here somewhere around 0.43. If we look at the world is like this. So India in the 1990s had a higher gender inequality than the world. India has progressed on gender inequality now to a position where India is better than the world average. Earlier, India was worse than the world average. Now, India is better than the world average. है ना? This is clear? So, India has done decently as far as gender inequality is concerned, because from the levels where we started, in the last 30 years, we have done a very decent job. अब ऐसी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं? This is brilliant information for the mains. Mains में let's say you get a question on gender inequality.
तो यू से दैट इंडिया हैज, अब मुझे जेंडर इनइक्वालिटी पे, विमेन्स एम्पावरमेंट में मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो मैं क्या लिखूंगा? इंडिया हैज अ हिस्टोरिकल बर्डन, इंडिया के पास एक हिस्टोरिकल बर्डन है ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। पहले से अगर मैं देखूं, इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी काफी हाई थी। However, on the basis of social justice, however, on the basis of India's policies of empowerment for women, India is progressing faster than the world. And in the last 30 years, India's progress has reached to a level where we are now better than the world average as far as gender inequality is concerned. And I will quote these figures. Now, this looks like a much more comprehensive answer because we are able to back it with statistics, and it actually reflects India's condition. If you look at it, it reflects India's condition. Now, अब पता चलेगा कि आप लोगों में से कितने लोग वर्ल्ड के बारे में अवेयर हैं, रादर इंडिया के बारे में अवेयर हैं. I will ask you one simple true or false question. India's gender inequality index is expected to rapidly decline. ट्रू फॉल्स मत बताना, ट्रू फॉल्स बोलोगे तो रीजन देना. जिसने रीजन दिया उसे मेरी तरफ से इनाम, जिसने रीजन दे दिया उसे इनाम मेरी तरफ से. काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया, तो अब कोई इनाम नहीं मिलेगा. अगर सिर्फ एक ने दिया होता तो सही मिलता. द आंसर इज ऑब्वियसली ट्रू बिकॉज ऑफ नारी शक्ति अधिनियम, which is women's reservation in the parliament. India has given women reservation in the parliament. When will this take effect? This will take effect in 2026. In 2026, after the delimitation exercise is done, we will have women's reservation in parliament. After we have women's reservation in parliament, in the GII, one of the criteria was this: parliamentarians, men and women. Once this reservation is granted, this figure will automatically rise. Once this figure will rise, what will happen? Once this figure will rise, what will happen? Our gender inequality index will become lower. है ना? There will be more women in parliamentary positions because there is reservation. Right? So our GII will decline. It will rapidly decline because as soon as this is implemented, ekdam se number of women in parliament will increase. There will be a rapid decline in gender inequality index. Okay. Now, the next topic we have to see is India's pace of poverty reduction. अब ये बहुत important topic है, इसमें ही आपका मेंस का टेस्ट होगा. This is a very important topic. Please listen as carefully as possible. ठीक है? We have to look at what we are studying right now is India's performance or India's pace of poverty reduction. Just a quick recap. अभी हम कैसे मेजर करते हैं? We measure in terms of, how do we measure poverty? Household consumption expenditure survey, mixed recall period, and we look at Tendulkar committee poverty line basket. इसके बेसिस पे हम मेजर करते हैं, and we check both behavioral components and
normative components. That is what we are doing right now for measurement of poverty, है ना? Now, अब मान लो मुझे इंडिया की पेस देखनी है, इंडिया की पेस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन फ्रॉम 1990 और रादर फ्रॉम 1950s, मुझे 1950s से देखनी है आज तक कि इंडिया ने कितनी पॉवर्टी रिडक्शन की है. तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड? The first thing that is required for a fair comparison is I need to know 1950s poverty level on the basis of the same way in which I am measuring today's poverty level. जैसे मैं आज मेजर करता हूं poverty level, same way मुझे 1950s का poverty level भी मेजर करना पड़ेगा, right? So now what I have to do is I have to apply the Tendulkar poverty line basket to the 1950s. तो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन बास्केट कब पता चली? 2009 में. अब 2009 में जो उसकी वैल्यू थी, मुझे वो वैल्यू एक्सट्रैपोलेट करनी है कि इस बास्केट ऑफ गुड्स का वैल्यू क्या रहता होगा 1950 में. उस बेसिस पे 1950 के डेटा पे, कंजम्पशन डेटा पे मैं पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करूंगा. सो इट इज अ फेयरली डिफिकल्ट टास्क टू डू. तो जब हम पेस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन देखते हैं ऑफिशियल एस्टिमेट्स में ये निकालना, हम निकाल लेते हैं, वी डू सम स्टैटिस्टिक्स, statistical calculation to find this out, but generally it is a different thing, difficult thing to do, because how will you estimate the poverty line basket of 2009 at 1950s level, then put it on the consumption expenditure data of 1950s and estimate population of poverty? तो ये थोड़ा मुश्किल काम है, but generally we do it. This is exactly how we do it, by the way. ऐसे ही करा जाता है ना? तो इस बेसिस पे क्या देखा गया कि इंडिया की अगर पॉवर्टी की बात की जाए, हमने तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन बास्केट को ही पीछे यूज किया, और उसकी अगर बात की जाए तो इन 1950s वी हैड 56% ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन स्टेटस. 1950s में 56% ऑफ बीपीएल स्टेटस था. 1993-94 में 45% ऑफ बीपीएल स्टेटस वाज देयर. 2004-2005 में 37.2%. 2009-10 में 29.8, 2011-12 में 21.9 एंड 22-23 का अभी रिसेंटली देयर हैज बीन अ हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ है ये, बट इसका डेटा जो है वो दैट हैज बीन रिलीज, बट इस पे पॉवर्टी लाइन बास्केट अप्लाई नहीं करी गई है ऑफिशियली. अब व्हाई ओनली दीज इयर्स? ये सारे ईयर मैंने क्यों लिखे यहाँ पे? व्हाई स्पेसिफिकली आई हैव रिटन 93, 94, 2004, 5, 9, 10, 11, 12? Because these are the years when the household consumption expenditure survey was held. Right? Now, the household consumption expenditure survey was held in 2017 also. But this data was not published by the government. Government ने इस data को publish नहीं किया, simply because they said कि ये जो data है, this is largely inaccurate. This data is largely inaccurate, and they themselves said कि हमसे डेटा ढंग से पब्लिश नहीं हुआ है, हमसे डेटा ढंग से पब्लिश नहीं हुआ है, हमने जो कलेक्शन की है उसमें कुछ इनएक्यूरेसीज आ गई हैं, तो गवर्नमेंट ने डेटा पब्लिश ही नहीं किया. दिस डेटा वाज नॉट पब्लिश्ड, नॉट मेड अवेलेबल पब्लिकली, देयरफॉर दिस इज द डेटा, दिस इज द डेटा दैट एक्चुअली गॉट पब्लिश्ड रिसेंटली. ये डेटा मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ये अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है. तो अब इस पे पॉवर्टी लाइन के फिगर्स लगेंगे तो हमें मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट पता चलेगा, बट दिस हैज बीन व्हाट द डेटा हैज बीन सो फार. नाउ if you look at this data, from 45% poverty in 93-94, India has reached 21% poverty in 2011-12. Right? So 20 years में the rate of poverty reduction, 20 years में the rate of poverty reduction is huge. Almost 20% poverty India has reduced. More than 20% actually India has reduced in 20 years. Actually less than 20 years. तो काफी अच्छा. अगर आप 93 के बाद देखो, इफ यू लुक एट पॉवर्टी रिडक्शन फ्रॉम 1950 टू 93, तो यहां पर जो रेट ऑफ रिडक्शन है वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है. इट इज ओनली 11% इन अ पीरियड ऑफ 40 years. बट नाउ इन लेस देन 20 years it is more than 20%, almost at 25%. What happened in this time? ऐसा क्या हो गया इस टाइम पे कि एकदम से इंडिया का पॉवर्टी रिडक्शन रेट बिकम सो हाई? व्हाट हैपेंड एट दिस टाइम? इस टाइम पे हुए इकोनॉमी में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स.
These reforms were largely referred to as liberalization, privatization, and globalization reforms, the LPG reforms of 1991. After that, we see a drastic decline in poverty in India. Drastic decline हुआ है poverty in India में after 1991. Therefore, this decline has been, or I can say it is correlated with high growth. This decline has been correlated with high growth. So, जब India has grown quickly, when India has had a high rate of GDP growth, in those years, India has also reduced its poverty very quickly. Let's analyze this further. Now, ये तो इंडिया का केस है. Let us look at this similar data from a different country to verify our conclusion. What is the conclusion we made so far? That in periods of high growth, there is very quick reduction in poverty in the country. Let's compare this with China. China in the 1950s had 60% poverty. In the 1990s, their poverty had gone to less than 20%. Today, it is less than 2%. In this time, China has shown consistent double-digit growth in GDP. Double-digit growth obviously meaning more than 10% growth in GDP has been shown by China in these years. Therefore, even in China, I can say that when the country grows quickly, if the country grows quickly, it will reduce poverty fairly quickly. Right? Now, अब मैं आपको लाइफ का एक ऐसा लेसन देना चाहता हूं which is actually a lesson in logic. And most people that I have met in my life, they do not understand this logic that I'm going to tell you. It will automatically make you a better and more logical human being if you can understand the statement that I'm writing on the board. इस बात को समझना can solve a lot of life's mysteries for you. ठीक है? For example, you say जिस दिन शिवन ब्लैक शर्ट डालता है उस दिन वो बेटर पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है. जिस दिन शिवन wears a black shirt, that day he teaches very well. इन बातों के बीच में कोई लिंक है, कोई सेंस है इस बात की? Is there a sense between these two things? कि मैंने ब्लैक कपड़े डाले हैं तो मैं बेटर पढ़ा रहा हूं. जिस दिन शिवन ये वाले स्पेक्स डालता है, द एक्सप्लेनेशंस आर बेटर. जिस दिन ब्लू वाले स्पेक्स डालता है, द एक्सप्लेनेशंस आर वर्स. कोई लिंक है? कोई लिंक है दोनों के बीच में? नहीं. What I am explaining right now is correlation. There is a relationship, but this relationship is an observed relationship. I have observed that when Dr. Shivan wears a black shirt, he teaches better. Black shirt is not causing me to teach better. It is merely correlating me. It is a correlation. कि अच्छा black पहन रहा है और अच्छा पढ़ा रहा है. Unrelated things are there, but they are related in terms of my observation. When I observe, it appears to be true. For example, I say that I teach science and technology well because science and technology is mostly biology and I am a doctor. If I say this is a statement of causation. If there is the word because in a statement, it is a relationship of causation. What can I say here? Because I am a doctor, I know biology. Because biology is asked in science and technology, I can teach it better. This is a statement of causation. Right? Correlation is a different thing. Correlation is black shirt and better concepts. Yeah, better conceptual explanation. This is not a causation link. You cannot say, I was wearing a black shirt
or I explained better concepts because I was wearing a black shirt. There is no because or causation link here. There is merely a correlation. ये आपने ऑब्जर्व किया that when I wear a black shirt I teach better. ठीक है? This is correlation, this is causation. दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है. And once we know this, a lot of things in life become easy. For example, this person X was a student of ABC coaching and this person cleared UPSC. This is a statement of causation or correlation. This is a statement of causation or correlation. बताओ. This is a statement of causation or correlation. हो गए कंफ्यूज. मुझे पक्का उम्मीद थी कि सब गलत जवाब देंगे and that is exactly what has happened. देखो जल्दी जवाब देने के कोई पॉइंट्स नहीं है, सही जवाब देने के पॉइंट्स हैं, है ना. देखो हाँ, somebody is writing if you are the teacher then it's causation. In this statement you cannot give an answer. आप आंसर नहीं दे सकते स्टेटमेंट का. For this statement you will have to ask the student आपको कितनी हेल्प मिली. How much help did you get from this coaching in your journey of clearing UPSC? If the student says कि मैंने तो सब कुछ यहीं से पढ़ा, whatever they taught I listened to, मैं सिर्फ वही पढ़ा है और कोई नोट्स नहीं पढ़े लाइफ में, it becomes a statement of causation. है ना. If he says I only took this coaching, I did not follow it, मैंने फॉलो नहीं किया, it becomes a statement of correlation. There is no causative link, there is no definitive link, it is merely a fact that he is a student and he has cleared. एक चीज है कि वो बोले कि नहीं मुझे हेल्प हुई थी. Now apply this to the ethics of the edtech sector. This is how you link subjects together. Apply this to ethics of edtech sector. Is it okay for edtech or any coaching to claim any student as their result till the student themselves gives a note of consent? जब तक खुद स्टूडेंट ना बोले कि मेरे को हेल्प हुई थी, is it okay for me, अगर मैं भी मान लो ये क्लेम करूं कि this person is my student, देखो रैंक 1 थे, ठीक है, जब तक वो खुद ये स्टेटमेंट ना दें, is it okay for me to claim? It's absolutely not okay for me to claim, है ना. बट ये होता है. That is why, and you can see this on my YouTube channel, और अभी रिजल्ट आएगा तो again I will demonstrate this to you. I never claim someone as a student who has made it to the exam unless they themselves say this to me. जब तक वो खुद नहीं बोले मैं नहीं करता. That's why whenever अभी एक ही बार हुआ है कि मैंने पढ़ाया और रिजल्ट आया in 2023, 2024 में तो अभी रिजल्ट आया नहीं. Even when the result comes this year, I will only post videos of people themselves saying that I have helped them. Only then I will say I have contributed. Otherwise, I will never say I have contributed. This is why we don't take names of people till they themselves give us their videos. If you go to Sarthi IAS का YouTube and you scroll down a little bit, last year की आप अप्रैल या मई का टाइम देखोगे, you will see a lot of videos of people who were rankers last year, who have said themselves कि हमें help हुई. That is why we have put their videos out there. है ना. मेरे YouTube पे जाके देखोगे, there is a video of last year's results. Last year there were at least 55 people who were in the final list who themselves told me, gave me videos saying that sir you helped me. Only then I put their name out there. This is causation, this is correlation. Causation correlation में फर्क समझ आया. हम पढ़ क्या रहे थे?
it has been seen that when there is high growth, there is fast poverty reduction. When there is high growth, there is fast poverty reduction. Is this causation or correlation? अब ये बताओ. Is this causation or correlation? Very good. This is correlation. What should I write in front of this word? देखो, I have seen, it is observed. I have observed that when there is high growth, there is poverty reduction. जब high growth होती है तो poverty reduction होती है. This is a correlation statement. What can I write here? What is one word that I can write here? If I write this one word here, this will become a statement of causation. ऐसा क्या लिखूं मैं यहां पे कि ये causation बन जाए? अरे बिकॉज लिख के थोड़ी होगा यार. नहीं बिकॉज, अरे बिकॉज बोल रहे हो. बिकॉज तो बिकॉज विल बी एन एक्सप्लेनेशन. बिकॉज लिख के थोड़ी बन जाएगा. गुड, वेरी गुड. हुएवर गिव दिस आंसर, आपका नाम नहीं पढ़ पाया मैं. When I write there is inclusive high growth. When I write there is inclusive high growth. Inclusive means all are benefiting because of the growth. Inclusive high growth. Then there is poverty reduction. Then this becomes a statement of causation. समझ आई बात? If I write inclusive high growth, it becomes a statement of causation. If I simply write high growth, it is possible कि ये जो growth हुई है ये सिर्फ उन लोगों को मिली है who are super rich. Currently, Reliance in India is valued at $250 billion. If something happens and Reliance tomorrow becomes valued at $500 billion, India will experience high growth since Reliance is a Indian company. But will this directly lead to poverty reduction? Maybe, maybe not. It might lead to a correlation. But if I write inclusive high growth is happening, then I can definitely say there has been poverty reduction. Right? Up. Let me show you something. Even the note. Okay, I hope this is it. Nope, this isn't. Just give me a second. सारे irrelevant links मिल जाते हैं. सारे irrelevant links मिल जाते हैं. काम का एक लिंक नहीं मिलता है Bing पे सर्च करने में. नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है बाय गॉड. ये देखो यूपीएससी का नहीं मिलेगा, सबका मिल जाएगा. This is pretty shocking. But anyway, छोड़ो, रहने दो. GS3 का मेंस का सिलेबस अगर देखोगे, if you look at the GS3 main syllabus, the first topic is inclusive growth. First topic in GS3 main syllabus is inclusive growth and issues arising from it. ये पहला टॉपिक है. This is the first topic of inclusive growth and issues arising from it. पहले नोटिफिकेशन ही सर्च किया था यार, नोटिफिकेशन भी नहीं मिल रहा था. वो Bing है ना, वो गूगल नहीं है. आप इस कंप्यूटर में वो नहीं है, गूगल क्रोम नहीं है. But this is the point. This is what I was trying to show you.
This is the first topic of the main syllabus. दिखाई देता हूं मैं, not such a big deal. I'll just find it. हद्दी हो गई. Just give me a second. ये रहा, finally got it. ये देखो, GS3 का सिलेबस है ये. This is the GS3 syllabus. It's not the first topic, it's the second topic. Look at this. So if growth is inclusive, then it is helping in poverty reduction. इसको हम और भी देखेंगे, right? That is why this is part of the syllabus and our model of growth must be inclusive. But अभी तक हमें क्या पता चला है? That this is merely a statement of correlation. ये एक correlation का statement है, causation statement नहीं है. Now, if we look at how growth has happened in India and how poverty reduction has happened, अगर हम देखें, we have seen that high rate of growth is related with high pace of poverty reduction. Okay, now, so the correlation coefficient between growth and poverty in India is 0.6, which means that if our growth rate, ध्यान से सुनना, growth rate increases by 1%, growth rate increases by 1%, अभी तक हम 5% पे ग्रो कर रहे थे, कल से 6% पे ग्रो करना शुरू कर दिया. Growth rate increases by 1%, the rate of poverty reduction increases by 0.6%. These words are very important. What are we trying to say? India is currently growing. Let's say India's current growth is at 5% and India's rate of poverty reduction is 3%. So I can say India is having a 5% GDP growth and whatever India's value of poverty, India में जो भी let's say 100 लोग poverty में हैं, our rate of poverty reduction is 3%. Next year 97 people will be in poverty in India. ये current states है. This is how this exists at the moment. This statement is saying that if this growth rate becomes from 5% to 6%, India's rate of poverty reduction will become from 3% to 3.6%. समझ आई ये बात? Is this clear? Is this clear? So India has a fairly high, India has a high level of correlation between growth and poverty reduction. है ना? India has a high level of correlation. Causation नहीं है ये. अगर यहां causation होता, I would want to understand कि इसका reason क्या है. But it is not causation. It is correlation. So when India pre-1991, before 1991, India was growing at this figure, 3.5 to 4%. Pace of poverty reduction in India was slow. 1991 onwards, India starts growing at 6%. Pace of poverty reduction in India increases. 2000 onwards, India starts growing at 7.5, sometimes even at 9%. We have very high rate of poverty reduction, close to the highest pace in the world at that time. इस टाइम पे वर्ल्ड में one of the highest pace of poverty reduction we had because the growth became suddenly higher. Now, with this logic,
what happens to poverty during COVID? During COVID, what happens to poverty with this logic? In COVID, we have periods of negative growth, so poverty will increase. ये बात समझ आ रही है? ग्रोथ इन कोविड वॉज नेगेटिव, उल्टी हो गई ग्रोथ, रिसेशन शुरू हो गया, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड, सो पॉवर्टी इंक्रीज एंड दिस वाज आल्सो सीन. ये भी देखा गया कि कोविड के टाइम पे पॉवर्टी बढ़ी इंडिया में. ओके, नाउ एज फार एज वी नो, पॉवर्टी रिडक्शन के फिगर्स जो हम इंडिया में देख रहे हैं, अभी तक हमने क्या देखा? वी सॉ द फिगर्स ऑफ 1950s. हमने देखा कि 1950s में पॉवर्टी क्या थी, फिर 1990s में क्या थी. इतने टाइम तक इंडिया ने सिर्फ 11% पॉवर्टी रिड्यूस करी. फिर 1990 से 2010 तक, इन 20 सालों में इंडिया ने ग्रेटर देन 20% पॉवर्टी रिडक्शन कर ली. सो इंडिया हैड अ वेरी फास्ट पेस ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन एट दिस टाइम. बियॉन्ड दिस, one HCES was supposed to be conducted in 2017. यहां पर ये हुआ ही नहीं, तो we don't have the data. अब हुआ है HCES 2023 में कंप्लीट हुआ है, ये अभी पब्लिश किया है. इस पे अभी पॉवर्टी लाइन बास्केट का डेटा अप्लाई नहीं किया गया, इस पे PLB अप्लाई नहीं किया. तो इसके आगे फॉर मी टू कंपेयर हियर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स नहीं है. देयर आर नो ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स एट द मोमेंट. हो गया है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, इट हैज हैपेंड. अभी इस पे पॉवर्टी लाइन के फिगर्स लगने हैं, अभी ये डेटा आएगा, मे बी इट विल कम इन नेक्स्ट 4 to 5 months, बट राइट नाउ इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कंपेयर एज फार एज ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स आर कंसर्न्ड. तो व्हाट विल आई डू? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कंपेयर नहीं करूंगा. आई विल यूज सम अनऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स. Official only means, the word official in terms of statistics only means statistics released by government of India. Statistics released by any other organization, no matter how credible that organization is, are counted as unofficial statistics. So even the statistics by the World Bank are unofficial. The only statistics that are official are the ones released by the government of India. Government of India के अभी figures नहीं आए, उन्होंने HCES कर लिया है, HCES पे पॉवर्टी लाइन का डेटा नहीं निकाला है. So I will have to use unofficial statistics to see my progress from this point. यहां से प्रोग्रेस देखने के लिए मुझे unofficial statistics से कंपेयर करना पड़ेगा. Now the statistics I have here are the statistics of the World Bank. Now World Bank की पॉवर्टी लाइन क्या है इंडिया के लिए, और what is World Bank's actual poverty line? It is $2.15 per person per day consumption expenditure in purchasing power parity terms. यही है, हमने पढ़ा था. If I relate this to the तेंदुलकर poverty line, अगर मैं इसको तेंदुलकर से रिलेट करूं, तेंदुलकर ने कहा था 32 per person per day consumption expenditure. अब ये वैल्यू 2.15 है, 2.15 इंटू व्हाट फिगर, क्या लिखूं यहां पे, किससे मल्टीप्लाई करूं 2.15 को टू गेट द रुपी वैल्यू? व्हाट शुड आई मल्टीप्लाई 2.15 विद टू गेट द रुपी वैल्यू? बताओ जल्दी से. 21, दैट्स ओके. तो ये अप्रोक्सीमेटली ये फिगर 43 के आसपास आ रही है, समवेयर अराउंड 43. 2021 ब्रॉडली मान रहे हैं, और ये फिगर 2009 की थी. तो इन 2017 दिस फिगर ऑल्सो वुड बी क्लोज टू 43. सो आई एम अज्यूमिंग कि जो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है और जो तेंदुलकर की पॉवर्टी लाइन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है. दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर बिकॉज इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इन्होंने भी कहा था इन्फ्लेशन के बेसिस पे एडजस्ट करना है हर साल. 2017 में 43 आएगी तेंदुलकर की वैल्यू, और वर्ल्ड बैंक की भी 43 वैल्यू है. तो सिमिलर सी वैल्यूज हैं, दे आर नॉट द सेम, सिमिलर सी वैल्यूज हैं. तो हम वर्ल्ड बैंक के डेटा को यूज कर सकते हैं फॉर कंपैरिजन. तो अब मैं क्या कर रहा हूं कंपैरिजन करने के लिए, मैं कहता हूं कि इन 2010 और 2011 इंडियाज पॉवर्टी वाज 21% एज पर
Tendulkar poverty line basket, which is similar to World Bank's poverty line. Now I have this data of 2021 given by World Bank. World Bank अपना खुद का डेटा निकालता है. World Bank ने 2021 में डेटा दिया कि India's poverty is now 12% on the basis of World Bank poverty line, which would somewhere be similar to Tendulkar poverty line. है ना? तो इंडिया इन दोनों को इक्वेट करके मैंने कंपैरिजन बनाया. ये फिगर इज एज पर तेंदुलकर लाइन, दिस फिगर इज एज पर वर्ल्ड बैंक, बट सिंस दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट द वैल्यू इज सेम, आई एम नाउ सेइंग दैट इन 2021 इंडियाज पॉवर्टी इज 12%. है ना? अब मैंने ये यूज किया, ये बात समझ आई? यहां तक इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? What I said, this is clear? तो मैं मान लेता हूं कि अक्रॉस द इयर्स तेंदुलकर की पॉवर्टी लाइन इज वेरी सिमिलर टू वर्ल्ड बैंक्स पॉवर्टी लाइन. वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन और तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन इज ऑलमोस्ट सिमिलर. नाउ आई कैन मेक अ कंपैरिजन. नाउ अब मैं आपके सामने एक फिगर लिखता हूं. लेट मी राइट अ फिगर इन फ्रंट ऑफ यू. फिगर इज इन 1993 इंडिया हैड 45% पॉवर्टी. In 2011, India had 21% poverty. In 2021, India has 12% poverty. So अगर मैं देखूं, almost 1% per year से India poverty reduce कर रहा है. India is reducing poverty by 1% per year. बहुत amazing rate of reduction of poverty है इंडिया का इस हिसाब से देखा जाए तो. Because obviously आप ये बात भी समझोगे एज अ स्टूडेंट भी ये होता है, 0 से 60 पे जाना आसान है, 60 से 80 पे जाना मुश्किल है, 80 से 90 पे जाना बहुत मुश्किल है, 90 से 100 पे जाना इम्पॉसिबल है. तो पॉवर्टी भी 45 से 20 करना आसान है, 20 से 12 करना और मुश्किल है, 12 से 6 करना बहुत मुश्किल है, 6 से 0 करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, चाइना भी नहीं कर पाया. बट अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टैटिस्टिक लेट मी राइट India has done a phenomenal job of poverty reduction. Can I say this? Can I say this statement? Yes or no? सही लिखा है मैंने ये? वेरी गुड. चलो अब आपका दूसरा टेस्ट. नाउ कम्स योर टेस्ट. Critically analyze this statement. Prove this statement wrong now. This is your test. You have 3 minutes to think. 3 मिनट सोचना. प्रूव दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. इस स्टेटमेंट को गलत प्रूव करना है. जल्दी जवाब मत दो, सोचो बैठ के, सोचो बैठ के, एंड प्रूव दिस स्टेटमेंट रॉन्ग नाउ. सोचना सीखो. प्रूव दिस स्टेटमेंट रॉन्ग. समझ आएगा मीन्स के आंसर कैसे लिखे जाते हैं. इस स्टेटमेंट को आप गलत प्रूव करके दिखाओ. 3 मिनट का टाइम है. गो.
चलो अब देखो, नाउ स्टॉप द चैट। अब मैं आपको बताता हूं क्या सोचना था। I've read your comments. You are on the right track. Many of you are on the right track. Many of you are on the right track. Now listen. Chat stop. Chat stop. अब सुनो, ये देखो, एक काम करते हैं, लेट्स गो टू द वर्ल्ड बैंक वेबसाइट। ठीक है, लेट्स गो टू द वर्ल्ड बैंक वेबसाइट। आई थिंक दिस इज द वर्ल्ड बैंक वेबसाइट। ये देखो, ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है। नाउ प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप, है ना, प्लीज स्टॉप। दिस इज द वर्ल्ड बैंक वेबसाइट। ये क्या कह रहा है? Poverty rate $2.5 a day, 2017 PPP figures, percentage of population 12.92। ठीक है, यही परसेंटेज है। अब annualized growth in per capita consumption, this doesn't matter, total population is this much, this is also okay। ये इंपॉर्टेंट है, it says GNI per capita, GNI per capita of India is $2,540 in 2023। This is again on the basis of PPP figures। $2,540 makes India what type of country? Low middle income country। Makes India a low middle income country। Now after it is a low middle income country, what is the poverty line that I should be using? $3.65। I should be using a $3.65 poverty line, not a poverty line of $2.15। $2.15 poverty line is for low income countries। Low income countries are those that have less than $1,500 of per capita income और GNI per capita। मेरा क्या है GNI per capita? 2540। तो मैं लो इनकम कंट्री में नहीं आता, मैं लो मिडिल इनकम कंट्री में आता हूं। इसकी पॉवर्टी लाइन क्या है? $3.65। तो अब एक काम करते हैं कि इस वैल्यू को चेंज करके यहां पे वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे, इट्स अ ग्रेट वेबसाइट, यू कैन डू दिस ऑन द वेबसाइट। आई डोंट नो इस पे हो पाएगा या नहीं, या इट इज पॉसिबल। लेट मी मेक दिस 3.65। अब मैंने पॉवर्टी लाइन, ये वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो। जस्ट राइट वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी इंडिया, तो वर्ल्ड बैंक की कंट्री प्रोफाइल आ जाएगी इंडिया की। नाउ द पॉवर्टी लाइन इज एट 3.65। नाउ दिस इज द अप्रोप्रिएट पॉवर्टी लाइन फॉर इंडिया। अब इंडिया में कितनी पॉवर्टी है? 44%। So if I put the poverty line of low middle income countries, my poverty becomes 44%। If it was 2.15, poverty line was 12%। तो अब मैं इंडिया के बारे में क्या कह सकता हूं? I can say about India that at this poverty line, if the poverty line is $2.15, then the amount of population living in poverty is 12%। If amount of poverty is, or poverty line is $3.65, then the amount of population living here is 44%। तो obviously this complete figure is 44%। ये this is 44%, so this figure is 32%। now think about this 32%। this 32% is barely above poverty line। जो मेरा ऑफिशियल नंबर है वो ये है ना, मैंने कहा था ना तेंदुलकर और वर्ल्ड बैंक को मैंने इक्वेट कर दिया। दिस 32% इज बेयरली अबव पॉवर्टी लाइन। अगर मैं पॉवर्टी लाइन को $1.40 से ऊपर कर देता हूं, $1.40 मीन्स व्हाट इन रुपीज? दिस इज हाउ मच फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंपैरिजन। $1.40 इज व्हाट वैल्यू? बताना जरा एक बार, $1.40 की क्या वैल्यू बनेगी? सोच के बोलना प्लीज। अराउंड 30, 29 बनेगी वैसे।
2928 वैल्यू बनेगी, है ना, 2928 के आसपास वैल्यू बनेगी। तो अगर मैं पावर्टी लाइन को मियरली 28 रुपीज ऊपर शिफ्ट कर दूं, सिर्फ 28 रुपए से 20 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, $1.40 से 1.40 है ना, ये दैट इज द डिफरेंस। तो अगर मैं पावर्टी लाइन को मियरली 20 रुपीज से 28 रुपीज से ऊपर शिफ्ट कर दूं, such a huge amount of population comes under the poverty line. So this population is barely above the poverty line. अब what can be one thing that can easily move this population below poverty line? मतलब ये population is very vulnerable population. बहुत vulnerable population है ना। अगर कुछ भी खराब हो गया इस population के साथ, ये सीधा नीचे आ जाएंगे, because they are barely above the poverty line. So what can I say? What can I say here? Don't say COVID. COVID is a health crisis. Poverty is right now, the poverty we are measuring is economic poverty, right? This is a COVID health crisis है, वो एक अलग चीज है। If these families, ये जो 32% families हैं, इनका एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हो गया ऑन अ हेल्थ इशू, मतलब लेट्स से दिस पॉपुलेशन इज देयर, आप हेल्थ पे सही जा रहे हो, लेट्स से दिस पॉपुलेशन इज देयर, इनके घर में किसी, नाउ थिंक ऑन द पर्सनल लेवल, लेट्स गो इनटू देयर हाउसहोल्ड्स एंड थिंक एट अ पर्सनल लेवल। अगर इसमें से किसी के घर पे लेट्स से एक ऑपरेशन कराना पड़ गया, जिसकी वैल्यू, जिस ऑपरेशन की कॉस्ट लाख रुपए, 1 लाख रुपीज कॉस्ट इज देयर ऑफ दैट ऑपरेशन, these people will immediately move down back into poverty line. So if there is any one out of pocket expenditure means मैं खुद अपनी पॉकेट से पे कर रहा हूं हेल्थ के लिए, इंश्योरेंस पे नहीं कर रही, one out of pocket expenditure can move these people back into the poverty line. They are so vulnerable. Correct? Stop the out of pocket expenditure of India's population on health. Don't let India's population spend on health from their pockets, because they are vulnerable, and one out of pocket expenditure can lead to health issues, can lead to going down poverty line. समझ आया? We have reduced poverty. We have reduced poverty, but we have only gone above extreme poverty. There is still a huge vulnerable population out there. पावर्टी कहां कहां है सिलेबस में? Where is poverty in the syllabus? GS 1 में है पावर्टी एंड हंगर, GS 2 में है पावर्टी, GS 3 में इकोनॉमी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है पावर्टी, बट इट कम्स इन द सिलेबस, डायरेक्टली मेंशन नहीं है। अब ये है 2015 का GS 2 का पेपर, क्योंकि GS 2 में भी है सिलेबस में। रीड दिस क्वेश्चन, रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट, पहले ये क्वेश्चन पढ़ो।
दूसरे वाला आप कर लोगे क्रिटिकल एनालिसिस? अब कर लोगे इसका क्रिटिकल एनालिसिस? अच्छा, अब ये भी पढ़ लो। अब 12 भी पढ़ लो। ट्वेल्व का भी लॉजिक समझ आ रहा है क्यों पूछा था? यू अंडरस्टैंड व्हाई 12 वाज आस्क्ड? सेम लॉजिक इज देयर। हाउ टू गेट प्राइवेट इनटू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अभी तक आयुष्मान भारत अनाउंस नहीं हुआ है, अब हो गया है, बट द लॉजिक इज द सेम। सेम सोशल जस्टिस की बात हो रही है, यहां पॉवर्टी के टर्म्स में या हेल्थ के टर्म्स में। ठीक है, अब यहां लिखा गया अर्बन एंड रूरल पॉवर्टी इंडिकेटर्स। ये क्यों लिखा गया था तब? बिकॉज हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा केम इन 2013, तो तब रीसेंट डेटा था, अब रीसेंट डेटा नहीं है, अब हमारे पास रीसेंट डेटा नहीं है। सो लेट्स लुक एट द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे दैट वाज कंडक्टेड रिसेंटली। Yeah, let's look at this. This is the recently conducted household consumption expenditure survey. इसका देखते हैं, ये कब हुआ? 2022-23 में, ये कंप्लीट किया गया था जुलाई 2023 में। इस टाइम का डेटा दिखा रहा है, अब ये सबसे रीसेंट फिगर है। दिस इज ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्वे। इसकी जरा रिपोर्ट देखते हैं कि क्या कहता है। इसमें पहले ये बताया हुआ है कि सर्वे की कवरेज क्या है, क्या क्या हमने पूछा, सर्वे का मेथड क्या था, क्या क्या इश्यूज थे पहले हमने जो करेक्ट किए। ठीक है, हमें अल्टीमेटली क्या देखना है? वी वांट टू सी द डेटा। पहला डेटा इसने बताया। अब इस पे क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत लाइकली है इन अपकमिंग 1 और 2 इयर्स इन यूपीएससी, बिकॉज दिस डेटा हैज कम। देखो, एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एंड शेयर ऑफ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स ऑल इंडिया, शेयर ऑफ फूड एंड नॉन फूड आइटम्स ऑल इंडिया एंड एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। क्या बोला? रूरल इंडिया में फूड पे एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, रूरल इंडिया में नॉन फूड पे एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, अर्बन इंडिया में एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन फूड, अर्बन इंडिया में एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन नॉन फूड आइटम्स। पहले इस रिपोर्ट ने ये बात बताई है। अब समझ आ गया क्यों रूरल अर्बन इंडिकेटर्स पूछा था? इसलिए पूछा था क्योंकि ये रिपोर्ट ऐसे आती है। दूसरा इसने क्या बताया? दूसरा इसने एक पूरा डेटा दिया है इसका। दिस इज ऑल इंडिया फ्रैक्टाइल क्लासेस ऑफ मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। फ्रैक्टाइल क्लासेस क्या होती हैं? जैसे परसेंटाइल होती है, द बॉटम 5%, 0 to 5% इन इंडिया आर स्पेंडिंग 1373 in rural areas and 2001 in urban areas. बॉटम 5% इंडिया का पर मंथ 1% स्पेंड्स 1373 एंड 2001, और ऐसे फिर 5 to 10%, 10 to 20, 20 to 30, ऐसे करके इस रिपोर्ट ने टॉप तक का दिया है। टॉप तक का दिया है। जो टॉप 5% है इंडिया का रूरल इंडिया में, दैट स्पेंड्स 10,000 रुपीज पर मंथ। जो टॉप 5% ऑफ अर्बन इंडिया, a person who is in this figure, top 5% of urban India spends rupees 20,000 per month. If you are spending 20,000 per month, you are in top 5% of India. अब ये गवर्नमेंट डेटा है,
and you are in top 5% of urban India. रूरल में तो 10,000 ही है फिगर. अब आपको याद है कि 10,000 रुपीज पर मंथ इनकम पे मैंने आपको कहा था आप टॉप 10% इंडिया में आ जाते हो. अब ये बात रिलेटेबल लग रही है? दिस इज नाउ गवर्नमेंट डेटा. ये मेरा बनाया हुआ डेटा नहीं है. ठीक है. अब फ्रॉम दिस इट इज पर पर्सन. इट सेज पर कैपिटा ना, यहां लिखा है पर कैपिटा लिखा है. मंथली पर कैपिटा. पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, नॉट पर हाउस होल्ड. हाउस होल्ड का अलग था, कैपिटा पर पर्सन अलग था, है ना. उन्होंने हाउस होल्ड की एस्टिमेशन दी होगी. ये डेटा पर कैपिटा है. हम अज्यूम करते हैं वन हाउस होल्ड ऑफ 5 पीपल. वी अज्यूम हाउस होल्ड ऑफ 5 पीपल फॉर डेटा, बट दिस इज व्हाट वी स्टडी. तो अगर आप इंडिया में 20,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आप अर्बन इंडिया के, बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्बन इंडिया इज डेफिनेटली नॉट बेस्ट इंडिया, बट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, मोर अर्निंग्स आर हैपनिंग इन अर्बन इंडिया. आप उसके भी टॉप 5% में हो अगर आप 20,000 रुपए महीना खर्च कर लेते हो तो. सो एक तो यूज योर प्रिविलेज वेल एंड अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटी इन दिस कंट्री. एंड टू अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटी इन दिस कंट्री वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनइक्वालिटी. हमने वर्ल्ड बैंक की एस्टिमेशन देखी, क्रिटिकल एनालिसिस देखा कैसे होगा. नाउ वी कम टू इनइक्वालिटी. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक. अब हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे. कुछ समझ आया? एनालिसिस अच्छा लगा? कुछ बढ़िया लगा देख के? डिड यू अंडरस्टैंड द एनालिसिस? है ना, समझ आया? चलो अब लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स. और इसके बाद 5 मिनट्स भी ज्यादा है, 3 मिनट्स, देन विल कंटिन्यू विद इनइक्वालिटी. Yashvardhan is saying by this manner only top 1% of India can afford courses of Sarthi IAS. If you look at our course of foundation, its cost is 20,000 rupees. It lasts for 15 months. So if you look at 15 months, then you have to divide 20,000 by 15. Then figure will come out to be 1.5k. So what we are actually spending is we are asking you to spend is 1.5k per month. Now going more affordable than this is not possible in our unit economics, because people also have to work. There's electricity cost,
ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती, है ना? तो उस हिसाब से, एंड इफ यू लुक एट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, आई थिंक वी आर द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स इन द मार्केट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वी डिलीवर, राइट? Samiksha is saying, have you analyzed every PYQ, searched up data and included? Yes, I have. दीपक स्पैम मत करो, एक ही क्वेश्चन 5 बार पूछने का मतलब ये नहीं है that I will answer. If you have a doubt, you ask properly in the doubt form. Now, let us now come to a discussion on inequality. ठीक है, मजा आ रहा है, समझ आया? अब now I think you guys can analyze poverty decently. अब आप एक decent analysis of poverty कर सकते हो. The one thing that you must understand is that poverty is also coming, poverty is also in the syllabus, poverty is also in the syllabus in GS1 and GS2. So far there has been no mains question on poverty from GS3, but in GS1 and GS2 there have been a lot of questions on poverty and inequality. इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में आता है इन GS3. GS3 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, वो आ रहे हैं रिलेटेड टू इंक्लूसिव ग्रोथ. वो हम कल पढ़ेंगे. वी विल रीड दिस टॉपिक इन डिटेल टुमारो, ठीक है? लेकिन GS1 और GS2 में पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जब आप सोसाइटी और सोशल जस्टिस पढ़ोगे. And both these things will be taught to you by Varun sir if you are in foundation course here. He teaches it very very well. सोसाइटी और सोशल जस्टिस में आपको ये पॉवर्टी पढ़ाया जाएगा फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव. इकोनॉमी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने देख लिए, और इकोनॉमी में जो पॉवर्टी का इंपॉर्टेंस थी as far as means is concerned वो हमने देख लिया. Now there is a social justice component to this also. There is a social component to this that we will study in society and social justice when we study for means. समझ आ गया बात? अभी तक क्लियर है हम कहां पहुंचे हैं? नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ इनइक्वालिटी. और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आई वुड से इन इकोनॉमिक्स. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इनइक्वालिटी. नाउ लेट्स सी व्हाट इनइक्वालिटी इज. इनइक्वालिटी इज सिंपली differences between economic, social and political factors. इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल फैक्टर्स के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो इनइक्वालिटी है. नाउ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कुड बी इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सोशल इनइक्वालिटी कुड बी पीपल बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, सोशल एक्सक्लूजन. जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में देयर आर मेनी आर्टिकल्स that deal with social exclusion, such as articles related to untouchability, articles related to access to temples, public parks, public spaces, and political factors. Political inequality could be representation and access. The fact that how much representation a particular group has in the parliament, has in its local legislature, what access they have to political resources, that could be economic, social, and political inequality. Here what we are going to consider is mainly economic inequality, because we are reading economics, and you will notice that economic inequality, one person having very high income versus one person having very low income, this economic inequality can manifest in other forms. This economic inequality can manifest itself in other forms, right? If you have less wealth, if you have less income, then it might lead to you having social inequality and having less political voice also. Now, so when we have to think about inequality, the first question to ask, let's say I have to study inequality, the first question to ask is, why is there inequality in the world? This is the first question. We'll answer this question first. The second question we'll answer is, how do I measure? How do I measure inequality? कहां से मैं inequality को measure करूं? This is the second question we'll try and answer. First question we try and answer is, why is there inequality in the world? Now,
There are three reasons broadly that we will study for inequality. The first reasons are traditional reasons. Second reasons are Marxist reasons, as explained by Karl Marx. And the third reason is modern theory of inequality. What is modern theory? Modern reasons क्या दिए जाते हैं for inequality in India? Up. First is traditional theory. What does traditional theory say? Traditional theory says that it is natural factors such as accident of birth, accident of location, natural endowments that lead to inequality. For example, I was born in a family with 2 doctors. इसमें मेरी क्या achievement है? कुछ भी नहीं. But I was born in a family where there were 2 doctors. This has given me, touch wood, some natural endowment. This is accident of birth. Birth is merely an accident. I could not control where I was being born. But I was born in a family of doctors, and that family of doctors thankfully valued education a lot. So they always invested in my education. I was born, accident of birth, I was born in India. If similar situation I would have been born in Pakistan, I'm sure my current status would have been much worse. Right? It could have been better also maybe if I was born in a European country. Right? So accident of birth, accident of location, wherever I end up as an accident, that determines my current status. This is one. Second could be natural endowments. This is at country level. For example, country that has more resources. Today, in today's world, countries of the Middle East, they have natural endowment of oil. And oil is being used by all of the world. So lot of Middle East countries that are rich are simply rich because of the accident of resources present, because they have accidentally found oil there. उन्होंने तो कुछ contribute नहीं किया अपनी oil economy में, उन्होंने तो oil नहीं बनाया. Just because, for example, Saudi Arabia has oil, it is very rich, right? Second could be endowment in terms of geography. All across the world, it has been seen. It is a fact. All across the world, it has been seen that cities that exist on the coast are much more developed than cities in the interior. अगर मैं overall world का survey लूं, most big cities of the world are located on coasts. आप इंडिया में भी देख लो, there are 4 metros: Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata. Mumbai, Chennai, and Kolkata are coastal cities. Only Delhi is landlocked city. Most big cities of the world are coastal cities because it gives you access to a port. And since it gives you access to a port, right, it lets you develop more. So this is geographical natural endowment leading to inequality. Last, political factors. Consider the case of USA and consider the case of India. USA is surrounded by Canada and Mexico. India is surrounded by Pakistan, China, Bangladesh. Who has more political stability? Obviously USA, because USA has never had to invest in an army to defend itself. There is no hostile neighbor of USA. They don't have to invest in an army to defend itself. India has to invest in an army to defend itself. So India cannot invest in a blue water navy. Blue water navy is navy that goes beyond your own waters. USA is the dominant military power in the world today. To give you an example of their dominance, let me ask you this question. Which is the largest and most advanced air force in the world? Simple answer is question ka. This is not the tough question. Largest and most advanced air force in the world? Google मत करना please. है ना? कौन सी है? Very good. It is the US Air Force. मैंने जान के लार्जेस्ट के साथ मोस्ट एडवांस लिखा है. चाइना हैज अ लॉट ऑफ प्लेन्स बट दे आर नॉट एडवांस प्लेन्स. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं. Which is the second most largest and most advanced air force in the world? Second most largest, advanced and
like largest and most advanced air force, like I'm counting both factors together, second level पे कौन है? Very good. You will be shocked to hear this. It is the US Navy. The second most largest and most advanced air force in the world is the US Navy. First is the US Air Force, second is the US Navy. क्यों कर पाए वो इसमें इन्वेस्ट? पॉलिटिकल फैक्टर्स. आर्मी पे इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है. Even their soldiers are called marines. Marine मतलब sea related, deployment through naval forces. That is why they are able to dominate the world, because अपनी आर्मी पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, right? इसीलिए these are traditional reasons of inequality, कि because of accident, because of where you are born, there is inequality in the world. इसके आपको दो बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स देता हूं, टाइम तो है, चलो. एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बार एक स्टडी हुई. इन दिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी it was found that 60% of the people there were firstborn. Means they were the eldest child in their family. 60% of the people in Harvard were the eldest child of their family, because families generally invest more in their first child. This is traditional accident of birth. You don't control if you are the eldest child, but if you are an elder child, automatically your chances of getting into Harvard are more. This is again an example of traditional inequality. इसकी एक और मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं. If you look at the US and Canada, actually स्टडी कनाडा की है. कनाडा और यूएस में the sport of ice hockey is very popular. हम जिसको नॉर्मल हॉकी बोलते हैं, that is field hockey. What they generally play is ice hockey. Ice hockey वो नहीं टेबल वाला. Don't think of that. That is air hockey. Ice hockey is like frozen lake के ऊपर हॉकी होती है, right? They play with a small puck. इतना सा puck होता है ऐसा, इससे गोल्स करने होते हैं, ठीक है? या अब इसमें देखा गया, they obviously they have a very advanced sports infrastructure, so they groom their children from a very early age. बहुत early age से वो अपने children को groom करते हैं. So it was seen that most of the people, जैसे sixth standard में trials होते हैं. If you are selected in these trials, you are asked to not then continue your education. आप education अपनी छोड़ के आप फिर hockey खेलते हो, because you make so much money here and there is so much growth here कि then you leave your traditional education, you focus on hockey. और 6th standard में trial होता है, ठीक है? क्या देखा गया? It is seen that most of the people who got selected in the 6th standard were born in January, February and March. Now why? Most people selected in 6th standard were born in Jan, Feb and March. How was this explained? इन्होंने कहा कि जो ट्रायल्स होते हैं वो होते हैं दिसंबर में. Now in our life or in our age, 6 months of development doesn't matter that much. But अगर हम एक 6th standard के बच्चे को देखें, with 1 year more of development, अगर उस बच्चे को 1 साल और डेवलप करने को मिल जाए तो उसको बहुत एडवांटेज मिल जाती है. So a person who is born in January has had 12 more months of development than someone who has born in December, और वो सेम क्लास में है और उनको ट्रायल देना है, राइट? सो अब यहां इस बच्चे के पास 12 महीने ज्यादा हैं ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट. So these people turn out to be stronger and faster, so they get selected more. This is again an example of traditional inequality. इसमें उनका कोई बहुत अच्छा रोल नहीं है. Simple, it is accident of birth.
and traditional inequality that helps you get selected. But this inequality is just for explanation. ये जो ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी है ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है. दिस डज नॉट हेल्प मी सॉल्व एनीथिंग. आई कैन नॉट सॉल्व फॉर दीज फैक्टर्स. बट इफ यू कंसिडर दिस एट अ कंट्री लेवल, अगर आप कंट्री लेवल पे देखो, हाँ मैं इससे एक्सप्लेन कर सकता हूं कि ठीक है यूएस के पास बड़ी नेवी है, राइट, बट कैन आई एक्चुअली सॉल्व एनीथिंग? नो. इससे मैं कुछ सॉल्व नहीं कर सकता. दिस इज नॉट सॉल्विंग और ब्रिंगिंग एनी आउटकम्स फॉर मी, राइट. आई मस्ट कंसिडर फैक्टर्स दैट आर सॉल्वेबल. And it has been seen that over time, traditional inequality corrects itself over time. Over time ठीक हो जाती है traditional inequality. तो इसको तो हटाओ. This reason does not matter. इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, आपने शायद ये वर्ड सुना हो, called resource curse. ये कंसेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. रिसोर्स कर्स इकोनॉमिक सर्वे में भी यूज हुआ था. रिसोर्स कर्स क्या होता है? दिस इज technically you can see these are two words opposite to each other. Resource curse is like an oxymoron, right? Area that has very good resource potential still remains underdeveloped. So rather than a boon of resources, it becomes a curse of resources. This term was also used by the economic survey. Area जिसके पास resources हैं but it still fails to develop very well. For example, Africa, especially sub-Saharan Africa, Africa in the Saharan region. Some parts of Eastern India also face this resource curse. Now, it is not because of resources that they don't develop. ऐसा थोड़ी है कि resources हैं इसलिए develop नहीं हो रहा. The reasons for resource curse can be misgovernance, fractured society, very high corruption, lack of transparency in rules, etc., etc. ये रीजंस हो सकते हैं. सो यू शुड नो दिस टर्म रिसोर्स कर्स. ये टर्म आपको पता होनी चाहिए. नाउ ये तो ट्रेडिशनल इनइक्वालिटी थी, इससे तो मुझे कुछ खास फायदा नहीं होता. लेट मी कम टू द मार्क्सिस्ट इनइक्वालिटी, है ना. अब सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पीएसआई और ऑप्शनल्स वाले, और भी बहुत जगह इकोनॉमी ऑप्शनल्स वाले, उनको ये सब आना चाहिए. ठीक है. मार्क्सिस्ट इनइक्वालिटी क्या है? This was given by Karl Marx in his book Das Kapital. What did Karl Marx say? Karl Marx said that society has two classes. चलो इससे पहले answer this question. Who is known as the modern Marx? which person is known as modern Marx? बुक भी लिखी है इन्होंने, बुक का नाम भी सेम है, कैपिटल. पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा. Who is known as modern Marx? Anyone who can respond? अरे गांधी जी नहीं है भाई. If you haven't heard this name, Google him today. Thomas Piketty. ठीक है, पढ़ना इनके बारे में. इनकी बुक का नाम भी कैपिटल ही है. His book's name is also capital. Similar ideas are represented. There are many people who are known as modern Marx. He is one of them. Anyway, चलो, मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं कि एक सोसाइटी में there are two classes. One is the bourgeoisie, and yes, this is how you pronounce it. आगे से please pronounce it as this only, bourgeoisie. Okay? One is bourgeoisie, and one is the proletariat. ठीक है? The bourgeoisie have control. The bourgeoisie have control over the means of production, which are capital and land. So the bourgeoisie have control over means of production, which are capital and land, and they have control over means of coercion, that is armed forces and legal system and police. So this class, bourgeoisie, they control the capital and the land, and they control the armed forces, the legal system, and the police. Right? Since they control the capital and the land, these are the business owners, rich, wealthy class that earns interest, rent, and profit.
This class earns interest, rent, and profit. The proletariat are the working class. The working class earns wages, and wages, because they control labor, they are the ones who actually control the factor of labor. So bourgeoisie earn interest, rent, and profit. The proletariat earn labor. These are the business owners and these are the workers. There is always a state of class conflict. There is always a state of class conflict between these two people. The class conflict manifests itself in the form of struggle, where bourgeoisie try to exploit the proletariat and the proletariat try to resist this exploitation. He says that profit is the unpaid labor of the working class. The labor that is unpaid for. You don't pay for the labor. जो labor के पैसे आप actually नहीं देते हो, क्योंकि आप means of production control करते हो, आप profit अपने पास रखते हो. This is the exploitation of the worker that is happening, that leads to class struggle. To solve this, this is his economic theory. To solve this, बहुत simplify करके बता रहा हूं. To solve this, we must have small communes. इस चीज को सॉल्व करने के लिए स्मॉल कम्यून्स होने चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप्स होने चाहिए, who will govern themselves. When they govern themselves, when they are self-governing, the means of coercion मतलब धमकाना, intimidate करना, the means of coercion that exists with the bourgeoisie will be taken away from them. The means of coercion will be taken away from them, and it will be the self-governing body that is consisted of proletariats that will be governing. And then we will take away their means of coercion. After we take away their means of coercion, they will no longer be able to exploit the worker. And the profit, that is the unpaid wage, which is the unpaid labor, will be redistributed to all. So he says that from the idea of capitalist consumerism, where there is mindless consumerism, we first need to transition to socialism. Transition to socialism. When this transition to socialism happens, you need a strong state, a strong government, a dictatorial government, almost a dictator-like government that will make this transition happen. Then from socialism, you need to move to commune-based leadership, which is known as communism. In this commune-based society, there will be no state. यहां पर कोई state नहीं होगा, because यहां पे क्या होंगी? Self-governing communes होंगे. So it becomes a stateless society. The purpose of the state, the purpose of the government, is to merely enable this transition from capitalist consumerism to communism. Once the stage of communism is achieved, the government should exit, and there should be no government. Only these self-governing communes should rule the society. अब आपने, if you now understand this, every Marxist term you would have heard till date will now be clear to you. What are Marxist terms? Marxist terms means, what do people who are Marxists say? What are their slogans? Seize the means of production. This is the first leftist slogan. Seize the means of production. Take away the means of production from the bourgeoisie class. Workers of the world, unite, for you have nothing to lose but your chains. Workers of the world, unite, for you have nothing to lose but your chains. सब proletariat साथ में आ जाओ, because your chains of exploitation is what you are suffering. Only when you unite, this class exploitation will end. Let's establish a dictatorship of the proletariat.
दिस इज द मार्क्सिस्ट आइडियल. अब ये आपके जीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. ठीक है. अब in this theory, understanding this theory, what did Marx say for inequality? Inequality के लिए क्या बोला मार्क्स ने? हम inequality पढ़ रहे थे. Inequality ने मार्क्स ने बोला that because of all the conditions mentioned above, the rate of return on capital, जो capital पे rate of return है, it is much more than the rate of return on labor wages. क्या मतलब हुआ इस बात का? Rate of return on capital is profit. Income on labor is wages. So Marx says that in a society it is generally seen that profits will grow exponentially. आज प्रॉफिट 10 रुपए है तो कल 20 रुपए होगा. But wages do not grow exponentially. Wages grow steadily. अगर आज वेज 10 रुपए है तो कल 12 रुपए होगी, 20 रुपए नहीं होगी. वेजेस डबल नहीं होती. कंपनी कैन डू डबल प्रॉफिट्स. Wages do not increase at the same level at which profits increase. And this difference, rate of return on capital versus rate of return on labor, this difference is the one that creates inequality in society. This was the Marxist opinion. ठीक है, समझ आया what Marx was trying to say? Understood this logic of Marxist opinion? This was his opinion. Because of all of the features I mentioned to you, profits grow exponentially, wages grow steadily. This is why there is inequality in the world. This is Marxist theory of inequality. Now, last theory of inequality we have to understand is modern theory. What is the modern theory of inequality? Modern theory. Modern theory क्या कहती है? Modern theory firstly says that over time, that means in the long run, in the long term, wages पे जो rate of return है और profits पे जो wages का जो rate of growth है और profits का जो rate of growth है, जो growth of wages है और जो growth of profits है, in the long term it is the same. Medium term में there are some volatility. Medium term में ऊपर नीचे हो सकता है, but in the long term, growth of wages and growth of profit are pretty much the same. But still there is inequality. So modern theory of inequality says this inequality is mainly due to the factor of survival of the firm. क्या मतलब? Let's understand. In the year 2000, India had in its telecom industry, India की telecom industry में there were 10 players. There were very small players also like Hutch, Docomo, right? Vodafone was there, Idea was there, obviously Airtel was there, and there was no Jio. In 2000 in India's telecom industry, there were 10 players. Let's say at that time, the complete industry had a revenue of 1000 crore. Out of this, they paid wages of 400 crore. Other expenses were 300 crore and profit was 300 crores. ठीक है, मान लेते हैं कि at this time in the year 2000 या 2010 मान लेते हैं, 2010 would be a better estimate. In the year 2010, there were 1000 crore rupees of revenue, 400 crore were paid as wages, 300 crore as other expenses, and 300 crore as the profit. Today, the industry is of 2000 crore. In this 2000 crore, wages are 800 crores. The other expenses have become 500 crores and profits are 600-700 crores. Now, if I look at it, and obviously this is not accurate data, but broadly over a long time this data holds.
that in 10 years the wages have doubled and the profits have also doubled. That's okay. This is a fact. They say this is proven. The rate of return on capital is, which is profit, is not much greater than rate of return on labor. It is almost the same. What is the difference? इस टाइम पे there are 10 players, 10 players हैं 2010 में. In 2024 there are 2 players. Effectively there are 2 players, Airtel and Jio. तो दे से कि अब ओवरऑल वेजेस और प्रॉफिट में बहुत फर्क नहीं हुआ, बट एम्प्लॉइज तो ऑलमोस्ट सेम है. जितने यहां पे मान लो अगर 100 एम्प्लॉइज थे तो यहां पर 150 एम्प्लॉइज हैं. और वेजेस क्या हो गई, पहले 100 लोगों को 400 मिलते थे, अब 150 लोगों को 800 मिलते हैं. प्रॉफिट का देखूं तो पहले 10 फर्म में बढ़ता था 300 प्रॉफिट, अब 2 फर्म में बढ़ रहा है 700 प्रॉफिट. This is what causes the inequality. Inequality occurs because there is demise of firms. जो भी firms हैं, जो firms हैं, they die out in time in an industry, and this leads to inequality. This is modern theory of inequality. अब यहां पर next question आता है. यहां पर क्वेश्चन आता है भाई, व्हाई इज देयर डिमाइज ऑफ फर्म्स? कि फर्म्स खत्म क्यों हो जाती हैं? व्हाई इज देयर डिमाइज ऑफ फर्म्स? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसको आंसर करने के लिए 2 चीजें कहते हैं. फर्स्ट दिस इज कि देयर इज डिमाइज ऑफ फर्म्स बिकॉज सम फर्म्स सिंपली ऑफर बेटर प्रोडक्ट्स. आप टेलीफोन इंडस्ट्री में देखो, टेलीफोन इंडस्ट्री में अ कंपनी इज मेकिंग आईफोन्स, है ना? व्हेन अ कंपनी इज मेकिंग आईफोन्स, इट्स इन माय ओपिनियन इट्स अ मच बेटर प्रोडक्ट, एंड इफ देयर इज बेटर प्रोडक्ट तो कंपनी विल बी सक्सेसफुल. सो दे आर एबल, सम कंपनीज आर सिंपली एबल टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स एंड टेक मार्केट शेयर, लॉट ऑफ मार्केट शेयर दे आर एबल टू टेक. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. If you are able to make a better product at a lower price, offer good quality, you should be getting more profit. तभी तो growth होगी ना. You should be getting more profit. This is not a problem. They say the other reason for demise of firms, और ये आपको समझ आएगा, is the lack of rule of law. What is lack of rule of law? Unfair means are also used. Unfair means are also used. Unfair means. Unfair means are also used by various firms to become big and stop their competitors. जैसे रेड करा दी किसी पे, राइट? किसी पे फेक केस करा दिया, राइट? किसी की बिल्डिंग बंद करवा दी. This happens. This lack of rule of law means firms are unable to survive. And when firms are unable to survive, the big firm profits. And ये बात firms को भी पता है. This fact that they will only make exponential profits, that they will only make abnormal amount of profits. ये हमने पढ़ा था मोनोपोली वगैरह के टाइम पे. You will only be able to make abnormal amount of profits when you have conditions of monopoly, when you survive and no other firm survives. तो firms भी ये करती हैं. So in a country where there is lack of rule of law, what happens? Firm will bribe the government. Government will make regulations in such a manner as to benefit this firm. This firm will then make abnormal profit. This leads to inequality. This leads to inequality. So modern theory of inequality says that whenever there is no rule of law, it leads to the generation of inequality in this manner.
बिकॉज मोस्ट फर्म्स कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ, याद करो ये टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, अब रिलेट होना चाहिए, बैरियर्स टू एंट्री. देयर आर ह्यूज बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू फर्म्स, राइट. अब अगर इसमें हम इंडिया के एग्जांपल देखें तो बिफोर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जब तक 1991 का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का रिफॉर्म नहीं हुआ था, what did we have? License, quota, permit raj. Government used to select, government used to give licenses, government had quotas, government gave permits, that okay, scooters have to be produced, so you will produce 4 scooters in a day. After 1991, after the liberalization and privatization reform, government said reduce the barriers to entry. Reduce the license, quota, permit raj. Remove the government from business. Government has no business being in business. अब हमने क्या देखने को मिलता है? स्टार्टअप्स देखने को मिलते हैं. जैसे कि इफ यू विल लुक एट दिस स्टार्टअप कॉल्ड, और कंपनी रादर, अब तो स्टार्टअप नहीं बोलना चाहिए, मान्यवर. दिस कंपनी हैज मोर वैल्यूएशन, more market cap than Raymond's today. Raymond's is a very old company. Manyavar is very new company. Still they are, I think 10 times they have more profit as compared to Raymond's. Because India has reduced the barriers to entry. India has withdrawn government from business. India has allowed startups and allowed new players to enter. We can see cases like this. Therefore, now India's inequality should be declining as far as the modern theory of inequality is concerned. तो 1991 के बाद इंडिया में जो inequality है इनकम की, that should be declining. अब जब हम मेजरमेंट देखेंगे, then we will see this, but I'm just showing you something. Just showing you something. You can see that inequality in India is steadily declining since that time. ये कैसे मेजर होता है बताऊंगा. Steadily inequality in India is declining. This is level of inequality in India steadily decline कर रहा है. क्यों कर रहा है? Why is it declining? Because India has followed all of these measures. Right? This is the idea of modern theory of inequality. तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने समझा 3 reasons for inequality, 1 traditional, 1 Marxist, 1 modern. Right? क्या बात हो रही थी? Lack of survival of firms due to lack of rule of law. जब rule of law enforce किया, unfair practices करती थी firms, जैसे कि raids, fake cases, manipulation. To stop this, you have to have rule of law. जब जिन कंट्रीज में रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स बहुत हाई है, वेयर देयर इज लॉट ऑफ रूल ऑफ लॉ, फर्म्स कैन नॉट गेट अवे विद अनफेयर प्रैक्टिसेस. इसका एक एग्जांपल है वॉक्सवैगन का स्कैंडल. वॉक्सवैगन इज द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट एवरी थर्ड कार इन द वर्ल्ड इज अ वॉक्सवैगन. नाउ हमें यह बात पता नहीं होती बिकॉज वी डोंट नो दैट वॉक्सवैगन इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज. वॉक्सवैगन ओन्स ऑडी, Porsche, Lamborghini, and Skoda, Ducati. Volkswagen owns lots of other companies. वो बस दिखाते नहीं है because they want brand competition in the market. It's their strategy. But Volkswagen owns all of these companies. Every Audi in the world, for example, is a Volkswagen. Okay. Volkswagen ने क्या किया? In 2018 or 16 they did this. They had उनको in Europe, there were very high pollution emission norms, right? Pollution emission is also taken very seriously in Europe. So they installed a device in their cars
व्हाट दे डिड वाज, वो डिवाइस क्या करता था, जब उस कार का पोल्यूशन टेस्टिंग हो रही होती थी, दे समहाउ फिगर्ड आउट कि पोल्यूशन टेस्टिंग हो रही है, व्हेन दैट पोल्यूशन टेस्टिंग वाज हैपनिंग, तब वो एमिशंस, कार्बन एमिशंस कार के कम कर देता था. So when it was a peculiar device, when you were testing the car, testing happens in a different way, driving happens in a different way. Normal driving में तो emissions ज्यादा हैं, but जब testing होगी तब emissions कम हैं. This scandal happened, and they accepted it. ये माना गया, it was proved that they were doing this scandal. Okay, and they were put with a huge fine. Their CEO was removed. There was no tolerance for this unfair practice of Volkswagen. A lot of people returned their Volkswagen cars back to the company. So when there is rule of law, such unfair practices don't allow a company to succeed. So inequality in the world will only exist when rule of law is weak. This is the modern theory of inequality. अब यहीं से याद करो, we have read about Competition Commission of India. पढ़ा था हमने Competition Commission of India जब हम पढ़ रहे थे. When we read something in the form of types of markets, then we read this. One of the roles of Competition Commission of India is to ensure this rule of law, is to stop the unfair practices. This also we have seen, है ना, याद है, ये हमने डिस्कस किया. Now, this is what is basically the idea of inequality in the modern sense. समझ आई बात? Now, next question is, how do I measure inequality? अगर मेरे को inequality पढ़नी है, पहले मैंने समझा reasons of inequality. Reasons of inequality में my answer that I gave was, in the reasons of inequality, the answer that I gave was, I should have there are three reasons: traditional, Marxist, and modern. And it seems like modern is the most correct theory, and that is the one I will go off on. Now to complement my theory, I need to know how to measure inequality. अब मुझे inequality measure करनी है. Tell me which of these standards will give the highest inequality. हम इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं. मैं वेल्थ से मेजर करूं, मैं इनकम से मेजर करूं, मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से मेजर करूं, which will give the highest level of inequality. सबसे ज्यादा inequality कहां से आएगी? Obviously it will be wealth. और सबसे अप्रोप्रिएट किससे चेक कर सकते हैं? सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? अप्रोप्रिएट में क्यों डाउट है यार? अप्रोप्रिएट इज ऑफ कोर्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का हमारे पास पूरे इंडिया का डेटा है, हमने अभी देखा. हमारे पास पूरे इंडिया का डेटा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का. इनकम का पूरे इंडिया का डेटा कहां से आएगा? हाउ विल वी फाइंड द डेटा ऑफ इनकम फॉर द कंप्लीट कंट्री? इनकम टैक्स रिटर्न तो 5% लोग भर रहे हैं, इनकम टैक्स 3% लोग भर रहे हैं. कहां से लाओगे आप पूरी कंट्री का इनकम का डेटा? और जब आपको इनकम का डेटा नहीं मिल रहा, तो आप वेल्थ का डेटा कहां से ले आओगे लोगों का? हाउ विल यू फाइंड द वेल्थ डेटा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो आपके पास है ना, आप कर रहे हो ना हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बता के क्लास खत्म करूंगा आपके लिए. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से अगर मैं मेजर करूंगा इनइक्वालिटी, तो क्या आएगी? इट विल बी वेरी लेस, है ना? क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से अगर मैं इनइक्वालिटी मेजर करूं, इफ आई मेजर विद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I don't know if I close that or not, but I am sure you remember that table. आपको वो टेबल याद होगा जो हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का देख रहे थे. बॉटम मोस्ट was 2000, बॉटम 5% and top 5% was 10,000 और 20,000 रादर. अर्बन एरियाज की बात करें तो इतना ही फर्क था, है ना? अब इससे मेजर करूंगा तो बहुत कम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से मेजर करूंगा तो बहुत कम वो आएगी. There will be very less inequality.
बट अगर मैं वेल्थ से मेजर करूं तो इट इज सेड दैट टॉप 10% ऑफ इंडिया ओन्स 77% ऑफ द वेल्थ. दिस इज सेड बाय whom? बाय ऑक्सफैम. ऑक्सफैम कौन है? ऑक्सफैम एक एनजीओ है जो इनइक्वालिटी मेजर करती है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनजीओस. अब ऑक्सफैम ने वेल्थ के उस पे ही क्यों करी? व्हाई डिड ऑक्सफैम मेजर इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ? जब तक आप वेल्थ के टर्म्स में नहीं करोगे, टिल यू डोंट मेजर इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, फिगर विल नॉट बी एक्सट्रीम. टिल फिगर इज नॉट एक्सट्रीम, हु विल गिव डोनेशंस टू ऑक्सफैम टू रिड्यूस इनइक्वालिटी? तो जो एनजीओ, स्पेशली जो बाहर की एनजीओ इंडिया में इनइक्वालिटी मेजर करती हैं, हमेशा वेल्थ पे करती हैं, हमेशा वेल्थ पे करती हैं. और इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करो. बाकी तो डेटा ही नहीं है, बाकी तो डेटा अनरिलायबल है. तुम यहां से कर कैसे रहे हो? ये फिगर तुम निकाल कैसे रहे हो? इट्स नो, दिस नो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक. किसका ऑफिशियल डेटा है? ऑक्सफैम का खुद का डेटा है वो. दे हैव टेकन आउट देयर ओन डेटा. ये खुद का उनका निकाला हुआ डेटा है. ठीक है. तो एज अ रिजल्ट, बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे मेजर करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, वेल्थ पे मेजर करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा. तो वी समटाइम्स मेजर इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम. The method of measuring inequality in terms of income is called the Lorenz curve. And from the Lorenz curve, we construct what is called the Gini coefficient. ये नाम सुना होगा, आई एम श्योर आप लोगों ने. From the Lorenz curve, we construct the Gini coefficient. ठीक है. This is what we do. अब कल हम यहां से शुरू करेंगे. We will derive this Gini coefficient. एक ग्राफ बना के मैं आपको दिखाऊंगा, ऑल्दो आई कैन जस्ट शो यू एज अ प्रीव्यू. ऐसे एक ग्राफ बना के, दिस इज द लोरेंस कर्व, और लोरेंस कर्व से बनाते हैं हम जिनी कोएफिशिएंट. ऐसे इसी ग्राफ से जिनी कोएफिशिएंट बनाया जाता है. यहां हम कल देखेंगे. एक चीज और देखो डेटा आया, डेटा केम ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे. नीति आयोग के जो चेयरपर्सन हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? पॉवर्टी लेवल्स आर बिलो 5%, क्लेम्स नीति आयोग चीफ. बीवीआर सुब्रमण्यम जी ने क्या बोला? ही एक्सट्रापोलेटेड HCES सर्वे फाइंडिंग्स टू आर्ग्यू दैट ग्रोथ इज इंक्लूसिव, ब्रॉड बेस्ड एंड इनइक्वालिटी इज श्रिंकिंग. नाउ यू विल अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस लाइन. Every word in this line should be now clear to you. समझ आया कहां से लॉजिक बना? Are you understanding the logic of this statement? He has extrapolated HCES to say growth is inclusive, broad-based, inequality is shrinking. Now, मेरे हिसाब से तो ये काफी जादुई है, because we don't generally understand these things इतने डिटेल में. This is where I'll end today. कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे. लोरेंस कर्व देखेंगे, जिनी कोएफिशिएंट देखेंगे, कुजनेट्स कर्व देखेंगे, पॉवर्टी इनइक्वालिटी का रिलेशनशिप देखेंगे. ठीक है. ये सारी चीजें हम कल सॉल्व करेंगे. ठीक है. पॉवर्टी इनइक्वालिटी का रिलेशनशिप, जिनी कोएफिशिएंट, लोरेंस कर्व, कुजनेट्स कर्व, ये हम कल करेंगे. ठीक है. मजा आ रहा है? बढ़िया लग रहा है? थोड़ी क्लैरिटी मिल रही है? ठीक है. चलो अब वो सेम एक्सरसाइज करते हैं जो हम रोज कर रहे हैं. आई विल नाउ सम अप टुडेज क्लास इन 1 मिनट. आज की क्लास में आपको 1 मिनट में बताता हूं. ठीक है. 1 मिनट में वी विल सम अप टुडेज क्लास. वी स्टार्टेड टुडेज क्लास में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स. जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स से कैटेगरीज देखी एंड वी रियलाइज दैट लोअर द वैल्यू द बेटर इट इज. After we had studied the gender inequality index in today's class, then we went on to measurement of poverty.
when we looked at measurement of poverty in India, we were trying to see the progress that India has made. The progress was seen earlier in terms of MPI, which is very good progress. In terms of comparison of Tendulkar poverty line versus World Bank poverty line, here also we saw good progress. But if we were to do critical analysis of India's progress, we could say that there is a huge vulnerable population in India. This vulnerable population of India can anytime come out of poverty in case there is an incident. Therefore, we have schemes such as Ayushman Bharat, etc. Then from here, we tried to understand the inequality in India. For that, we first looked at the consumption expenditure data. And from the consumption expenditure data, we looked at what the bottom 5% and top 5% are spending on. After understanding this, we understood that inequality is of three types. It could be traditional inequality, इसके हमने reasons and examples देखे. It could be Marxist inequality, इसके हमने reasons और examples देखे. And finally, we looked at the natural or modern, sorry, not natural, modern theory of inequality, which basically relied on rule of law as a purpose of inequality. Now, when I correct for rule of law, I should be able to find that inequality in India is declining. That is exactly what has happened post 1991. Now, to further my understanding of inequality, I will from tomorrow read two things. First, I will read the Gini coefficient and the Lorenz curve. Then I will read the Kuznets curve. Then I will relate inequality with poverty. Then some final topics of inequality and poverty, especially the ones that are asked in the mains, such as poverty and population, such as poverty's relation with growth, poverty's relation with interest rates. This we will see. Once we complete this topic tomorrow, then I will go on to the next topic of inflation. Clear? हो गई क्लास रिवाइज. अब इतनी ही फ्लुएंसी से आपको भी करनी है. इतनी ही फ्लुएंसी से आपको भी करनी है. ठीक है. Arya, 25th December is my target. That is the idea. अब इतनी फ्लुएंसी से आप करो for the next few days. For the next few days till the 19th. Till the 19th of December. Till the 19th of December. You will have to excuse me a little bit because I will not be able to do a lot of active recall sessions because इस टाइम तक क्या है, हमारा डैफ चल रहा है. ठीक है. और मेरा बहुत टाइम उसमें जाता है डैफ एनालिसिस में, इंटरव्यू के बच्चों से बात करने में. एंड दिस इज द डेडलाइन फॉर डैफ. सो आई विल बी एंडिंग अ लिटिल बिट क्विकर. Right, quicker in sense कि we will not do a little bit of active recall till 19th. We will make up for it after that. ठीक है. चलो, thank you, have a good evening, hope you had a good class. I hope ये सारे concepts आपको समझ आ गए. Next we will move on to the idea of inequality and poverty. We will finish and उसके बाद we will study inflation. ठीक है. Good evening, see you.